हेलो वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी योर फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और हाँ, आज रेगुलर टाइम से थोड़ा सा लेट है, बट कोई नहीं यार। अब जानते हो भाई, वी हैव स्टार्टेड शॉर्टर वीडियोस एंड व्हाट नॉट। भाई क्रेजी अमाउंट ऑफ कंटेंट है बिकॉज यस द फुटबॉल इज बैक। फुटबॉल तो हमेशा था ही, आप बोल रहे हो, लेकिन कम ऑन, कप फुटबॉल ट्रांसफर्स, दैट वाज द नेम ऑफ द ऑर्डर जो था लास्ट 2 हफ्तों के लिए। अभी आ गया है लीग फुटबॉल, स्पेशली प्रीमियर लीग, एंड ऑफ कोर्स बाकी लीग भी कंटिन्यू होने वाले। एंड देयर इज सो मच, मतलब ना ही जस्ट चेल्सी फैंस, ट्रस्ट मी, जो बवाल मचा है चेल्सी ने ट्रांसफर विंडो में, उसके कारण क्या हुआ है, मतलब लास्ट 48 आवर्स, इफ यू आर अ चेल्सी फैन, इट इज डिफिकल्ट टू बी ऑन ट्विटर अगर आप लोग ऑपोजिशन फैंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। वी ऑल नो दैट, बट वी ऑल नो दैट दैट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट वही मैं बोल रहा था कि ये ना ही चेल्सी फैंस, बाकी फैंस भी यार बहुत सारा फॉलो कर रहे हैं चेल्सी, एंड इनफैक्ट वो भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यार वेटिंग टू काइंड ऑफ पाउंस कि यार चेल्सी प्लेयर्स फ्लॉप हो जाए। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग आर एक्चुअली एक्साइटेड जस्ट टू सी व्हाट डज चेल्सी ब्रिंग, बट नॉट जस्ट चेल्सी। यस, चेल्सी का है एक वेस्ट लंडन डर्बी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, चेल्सी वर्सेस फुलहम, एब्सोल्युटली। और हम ट्रांसफर विंडो जनरली हम रिव्यू भी करेंगे। यस, आई डिड अ वीडियो ऑलरेडी, आप लोग देखे होंगे होपफुली, शॉर्टर वीडियो जो मैंने ऑलरेडी कर लिया था। बट वी विल बी डूइंग अगेन अ लिटिल बिट मोर स्पेसिफिक ट्रांसफर विंडो रिव्यू, बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट द बिग गेम, स्पर्स सिटी, एज वेल एज यस देयर इज अ मिलान डर्बी, बार्सिलोना सेविया, एंड ऑफ कोर्स अ लॉट अदर प्रीमियर लीग गेम्स भी है। बट देयर इज सम ब्रेकिंग न्यूज एज वेल, हम वो भी डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली। भाई सब लोग अगेन जो भी यहाँ पर जुड़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और यस अगेन मच लव एंड मच अप्रिशिएटेड कि यार आप लोग गॉट मी ओवर द लाइन, ओवर 7K जस्ट अबाउट। लेकिन होपफुली द नेक्स्ट 1K इज वेरी वेरी सून, तो विद ऑल योर हेल्प इट कैन हैपन। और वो कैसे होगा, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, लाइक ऑलवेज से, एंड डू नॉट फॉरगेट इट इज ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल, सी इट विल रिमेन दैट वे। ऑफ कोर्स हम लेने वाले बहुत सारे कमेंट्स धीरे धीरे, एंड यस एफपीएल तो मैं भूल गया, वो तो डिस्कस करना है टुवर्ड्स एंड डिटेल में। और यस, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज इट शॉकिंग? नहीं, नॉट रियली। मतलब व्हाट हैपेंड विद मेंडी, यस द गाय वाज सपोज्ड टू बी नॉट बी, इवन भाई डिजर्व नहीं करता नेम लेना, लेकिन ग्रीनवुड का भी वही हुआ इन माय पर्सनल ओपिनियन। यस, मैं कोई मतलब मतलब आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट गोइंग टू से कि यार मुझे सब चीज मालूम है और ऑल दैट, रिपोर्टर नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही वियर्ड नहीं, इट वाज काइंड ऑफ एविडेंट, और इट्स क्लियर दैट ऑफ ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है। मतलब वी ऑल नो दैट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज, एंड यस दैट्स व्हाट हम थोड़ा बहुत उस पर भी डिस्कस करेंगे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम। अंकित भाई, या मतलब डेरेन हैज अ पॉइंट एज वेल। देखिए, there are two ways at looking at it, because sometimes what happens is there are people who are wanting to get money, और वो डाल देते हैं famous people on these cases, जैसे रोनाल्डो के केस में हुआ था, I remember in the past. But come on, this one it was quite evident, Darren, to be honest. But anyway, let's see. 80 Sanford for hi, how are you? Nice to see you as always. But again, like I've been saying, let's hit that like button. भाई आज again I am streaming at a different time than usual, तो YouTube क्या promote शायद नहीं करे इतना, और I know it's a weekday, late है थोड़ा सा, लेकिन hopefully with all your help we can have many more people watching, because we'll be discussing literally every transfer and literally every match. तो भाई वो कर लेते हैं, and as well as FPL वो कैसे होगा, again I request everyone to hit that like button in the stream as well as मेरे community post और my tweet as well. तो भाई सब लोग कर दीजिए, because we are going to be discussing a lot of things. आ जाओ यार भाई, again I would request at least all the members to actually try and help me out, mods as well in that. यहाँ पर मैं quick message भेज देता हूँ, let me just put it down. Okay, anyway, let's see, I've just put it on the members group as well. जवाहर भाई कैसे हो, nice to see you. Pudin as well, always good to see you. Yes, Madrid का भी important game है आज रात को, definitely very important game, we can even take those predictions towards the end. दर्शन, हाँ भाई ये देखिए, एक चीज जरूर से बोलूंगा, अभी ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया तो इमीडिएटली जो खत्म होने के बाद जो न्यूज आती है ना, ट्रस्ट मी, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, यहाँ कोई दो राय नहीं, हम ट्राई करेंगे, बिकॉज ओबामेयांग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लान एनीवे फॉर चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी। मतलब एज मच एज वाउट वेग और चाहे, आई एम प्रीटी श्योर दोनों ही क्लब जाएंगे एक एक स्ट्राइकर के लिए, व्हाट माय आई थिंक। मे बी एक टोनी ले जाए, एक व्लाहोविच ले जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन अभी टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि क्या होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू साइमन फिलिप्स एंड अ लॉट ऑफ अदर्स, आफ्टर द ट्रांसफर विंडो, ऑन दैट इज देयर मेन फोटे कि भाई वो ट्रांसफर्स कवर करते हैं, एंड वी नो दैट बहुत सारे क्लिकबेट्स आते हैं आफ्टर द ट्रांसफर विंडो इज ओवर। तो इन माय ओपिनियन जस्ट वेट अलोंग फॉर दैट न्यूज। लेकिन थैंक्स दर्शन फॉर कमिंग ऑन। Yes, absolutely, no problem as well. Darren, thanks a lot. Oh,
By the way, आज कवर किया था वीडियो में. Hopefully, they will do what I suggested. Let's see. We'll talk about that as well when time permit. लेकिन anyway, और एक वीडियो already कर दिया है. This is just getting started. Sir Felix, Mudrik and Enzo nice sir. चलो. ब्रो ये बताओ करीम बेंजेमा रिप्लेसमेंट कौन होगा किसको? भाई ये हो सकता है. By the way, जो स्पर्स के बारे में बात करने वाले might be. And yes, I know Endrick is the eventual replacement. लेकिन हो सकता है टुवर्ड्स से नेक्स्ट जनवरी इट माइट बी हैरी केन. अगर नेक्स्ट सीजन भी शुरू अच्छा नहीं करती है टॉटनहम तो मे बी हैरी केन, जस्ट सेइंग इट. और तब तक शायद बेंजेमा टुवर्ड्स एंड आते रहे. 12 months from now is what I'm talking about. Let's see. अमनदीप कैसे हो? टॉड बॉली एंड इकबाली विजिटेड इन ट्रेनिंग ग्राउंड टुडे. ग्रेट टू हियर दैट. Dad Boli is in the Cobham. Okay. Chelsea will win Champions League. Anmoldeep, wow, that is very very optimistic. सच में बोलो तो, but again, it's never say never वाला चीज होता है. Darren के comments bro, brilliant. चलो भाई आ जाते हैं. Gaurav in the house as well, absolutely. कोई नहीं, अभी देखते. Hopefully यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए it has been good days already or it becomes better. I don't think Greenwood कुछ difference maker होंगे, but anyway we'll talk about that. Devesh in the house as well. Clifford, Akash, भाई nice to see. Yes, I believe so. I'm not sure about preferring. Preferring क्या होता है मतलब from La Liga's perspective, yes. लेकिन ओवरऑल फुटबॉल पर्सपेक्टिव से नो आकाश, ऑनेस्टली स्पीकिंग. लेकिन तेबाज का कमेंट है, बहुत सारा फेवरेटिज्म करता है. इट्स प्रीटी श्योर ही हैज दैट थिंग अगेंस्ट बार्सिलोना, लुक्स लाइक इट, बट एनीवे लेट्स सी हाउ इट इज. बट no problem Devesh, absolutely. Aman, thanks a lot as well. And yes, Bayern Munich champ also confirms that. But कोई नहीं, आ जाते हैं भाई सब लोग. बात कर लेते हैं अब. चलो. Botticelli must be in UCL. Okay, interesting. चलो देखते हैं. यहाँ पर कुछ डाउट्स है, पुदिन में आऊंगा उस पर भी. बट चलो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम. अब बहुत सारे हम इधर उधर के बातें कर लिए. लेट्स स्टार्ट इट. ऑब्वियसली हम बात करेंगे अबाउट ग्रीनवुड. we'll definitely cover FPL towards the end of the stream because FPL deadline is tomorrow and not today. But again, I request भाई सब लोग to hit that like button. Come on, share कर यार. Be it WhatsApp groups, be it your Twitter account. You can retweet. जब ये लिंक वाला कॉपी करो और आप retweet करो. कहाँ गए भाई 7,000? कंग्रेचुलेशन कर रहे भाई. कहाँ गए 7,000 वाले? आ जाओ. 7,000 subscribers. Come on, let's get in. Come on, we have a army of 20 people watching us. Hopefully you guys can help me around there because you are part of the Almighty fam, very much so, more than ever. So bhai, let's do that. Let's have more people in because we're going to be discussing literally every club here. I don't know why abhi YouTube promoting कर रहा for this stream, but hopefully they'll do it. इसलिए मैंने शायद मेंबर स्ट्रीम बोला था, मैं अलग टाइम करूँगा कि नहीं, कोई नहीं, देखते हैं. Let's go with the first one. And yes, of course, Spurs Man City is the big one. Milan derby भी है big one इस weekend में. Of course, Barcelona Real Madrid games भी we can talk about. लेकिन Chelsea versus Fulham. Why? Because first of all, it's Almighty Blues. Yes, it's a fair challenge for all to see. But Chelsea have done इतना craziness in the transfer window. Yes, I know there are injuries, बहुत सारे, and suspensions as well. But Chelsea versus Fulham is a West London derby for people who have forgotten. Last कितने 2-2.5 हफ्ते पहले हमने हारा था. Yes, we lost to Fulham and that was crazy. भाई मतलब they hardly win. If I'm not wrong, Fulham in their history of the Premier League, in the history of the Premier League, खाली 2 बार जीती है चेल्सी के साथ और ये एक बार था. Imagine that. And that is how bad it was. लेकिन ये हो रहा है स्टैमफोर्ड ब्रिज में. दिस मैच इज हैपनिंग टुमारो. इट्स एन अर्ली किक ऑफ ऑन फ्राइडे नाइट. तो याद रखिएगा, वी विल डू द प्री मैच, वी विल डू द वॉच अलोंग होपफुली. हाँ मेरा टीवी खराब है लेकिन आई विल डू द वॉच अलोंग नो मैटर व्हाट, यू ऑल नो दैट. बट yes, it was a 2-1 comeback victory. You can say that by Fulham. Joao Felix was the story of the day, जो सस्पेंड हो गए थे. अभी as things stand, हाँ चलो मैं प्रीमियर लीग टेबल दिखाई देता यार. No problem, दिखाई देता. अरे Clifford यार, much love to you, absolutely. You're part of it. Congratulations to you as well, absolutely. Everyone who's a Almighty fan member is part of it, very much so, because you guys represent me as much as I represent you, to be very honest. So that is how it is. But yeah, definitely much love to Clifford. Shout out बनता है to fellow Almighty fan member. But yes, तो भाई टेबल वेबल दिखा दे थोड़ा बहुत. थैंक्स फॉर सुपर चैट, एब्सोल्युटली थैंक्स अ लॉट एज वेल. भाई वो 7K लोगों को ला दो, दैट विल बी much more impressive from you all. Yes, I really appreciate the messages, but hopefully सब लोग को ला दो. आप हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, because I know that today I'm doing it at an odd time. मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आज, देखते हैं if people come along or not, but कोई नहीं. We all talk football and we love to talk football. Daksh in the house as well. क्या हाल है भाई? By big game for you as well weekend में, because of Spurs City, Arsenal might actually further extend. That might be possible anyway. अरे भाई दक्ष आ सकते हैं. चलो भाई दक्ष के साथ हम शेयर ही करेंगे. दक्ष, आई एम शेयरिंग द लिंक विद यू. गिव मी अ सेकंड ब्रो.
And yeah, but everyone again, do not forget to like the stream. भाई मैं चेल्सी फिल्म कवर करो दक्ष, जस्ट इफ यू कैन जॉइन मी लाइक इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स इट विल बी परफेक्ट ब्रो. वो बढ़िया रहेगा. लेकिन हाँ, मैं आपको लिंक तो भेज ही रहा हूँ. Whenever you are ready, that's perfectly fine with me. That means a lot. And coming here, भाई देखिए, 10th versus 7th. अभी भी यार, I don't know. 10th Chelsea है, Fulham 7th, and that's how it is. But anyway, that's reality. Having said that, we should be able to win this Stamford Bridge. या भाई ये टेबल है. Yes, मैं फिट नहीं कर पा रहा हूँ चेल्सी को टेबल में. That's the reality of it. देखिए, आर्सेनल अभी भी टॉप है, 5 points ahead of City with 1 game in hand. But Chelsea 10th position, 29 points in 20 games. Fulham 31 points in 21 games. चलो, तो basically Chelsea can overtake Fulham. That's what I can say. Simply put. So वो एक motivation definitely with a London derby. Having said that, Fulham after EPL has commenced वापस World Cup के बाद, they are the team which has won the most matches in the Premier League. Wow. I didn't even know that. मैं अभी रीड कर रहा हूँ भाई, 4 मैचेस जीते after the World Cup has commenced, और conceded the third lowest goals. Plus याद रखिए जो हमने गेम हारा था, in that we conceded to Vinicius भाई, not Vinicius Junior, Carlos Vinicius, you all know that. Why not just that? Willian plays for them. Willian is the next Chelsea legend, I would say. Not really counted, but in my opinion, he is not even a cult hero. मैं तो उनको legend में डालता हूँ. Having said that, मित्रोविच भी वापस आ रहे. मित्रोविच ही वापस नहीं आ रहे. But yes, he was suspended for that game. And remember, that is not a good news for Chelsea, क्योंकि when it comes to headers, crosses, हम इतना अच्छा नहीं करते. Although हमारी डिफेंस इतनी बुरी लगी है recent मैच में, बोलना चाहूंगा. But they have also signed. Transfer window के बाद यही है ना, टीम्स कैसे चेंज होंगे. They might change immediately नहीं, but they have signed a fellow Serbian striker. दोनों सर्बियन स्ट्राइकर है. That will help certainly with the communication. और Mitrovic will be playing with the Serbian striker potentially going ahead. इस मैच के लिए I doubt it. Having said that, यहाँ पर जब मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, I was hoping for the best that we had some midfielders available. कि यार ब्रेक हुआ है 10 दिन का, we'll have some midfielders available, but the worst part of it is Kovacic is not available. पता नहीं यार, मतलब luck goes from bad to worse. Okay, I think Daksh has just joined. Let me just add Daksh as well. Hello. Long time no see. Long time. Transfer window banter is over finally. How do you feel? Finally khatam. We can move on and actually focus on the things that matter. That is Arsenal winning the league. Honestly, you have been doing it. We have not been doing it. हमें तो बहाना चाहिए था celebration का, कि भाई transfer window में at least जो था कि something that Chelsea are beating Arsenal on, in this season. But anyway, having said that, यार मतलब I know हम अभी Chelsea Fulham की बात कर रहे हैं, but generally speaking यार, मतलब for you, I know, मतलब apart from say your club, that is Arsenal, who do you think really won the transfer window in terms of not, हाँ Chelsea has really मतलब इतना सारा किया है हमने, लेकिन honestly, which is the club जो आपको लगता है कि they have done the most astute signings? Very, very difficult to assess that. I mean, I want to say my club because I think हमने depth में strength बढ़ाई है. The floor of the squad has been raised in the sense that the drop from Partey to Sambi was huge. Now Partey to Jorginho, not so huge. From Martinelli to, let's say, Reece Nelson at left wing would have been huge. Now Martinelli to Trossard, not so huge, right? So I would say हमने, and Kiwior apparently has been breaking records at training in terms of speed, strength, whatever it is. So that's also a good signing. नहीं, Serie A में he was actually one of the sought after ones here. I heard. Yeah, and by the way, congratulations on 7K. Yaar, I just saw. Yeah, just about, yeah, just thanks. I think you were also crossed 2K recently, तो I know on the road to 3K hopefully very soon, right? Yes. But हाँ भाई, सब लोग मैं अभी टैग कर देता हूँ. A for Arsenal सब लोग जानते ही hopefully अपने फैन में, तो भाई सब लोग please subscribe to him as well, and again do like. Yes, यहाँ पर मैं आज थोड़ा different time कर रहा हूँ, तो भाई जैसे देवेश बोल रहे हैं, कभी ना कभी होता है यार, algorithm sucks sometimes, but this is one of those streams, so hopefully you guys can help me out there absolutely. But हाँ, थोड़ा सा हम टीम न्यूज के बारे में बात कर रहे थे अभी. तो ट्रांसफर्स तो एक चीज है भाई, लेकिन दिस इज द बिग वन ना दक्ष, वी हैव टू स्पीक अबाउट इट. कम ऑन, एंजो फर्नांडिस. आई नो, मतलब देयर इज नो टू वेज अबाउट, लाइक अ मोड्रिक वी हैव ओवरपेड, लेकिन वहां पर एटलीस्ट आर्सेनल वर आल्सो विलिंग टू पे दैट फॉर मोड्रिक और क्लोज टू दैट. विद एंजो फर्नांडिस, like Chelsea were, I think, probably the only one who's ready to pay right now. So मतलब where are you on that? Yeah, first of all, like I said, it's an amazing job done by Chelsea to, one, pay it out in installments. Two,
tie him down to a long contract. Now, I think अभी मैं मोहक की stream पे भी था. Long contract के दो हैं. One is of course this very obvious amortization. You spread out the cost over time. I also think it protects Enzo's value over long time. Now, if you had given Enzo a 5-year contract and let's say 1 or 2 seasons he's not hit the heights it's expected, then Chelsea have to think, do we renew his contract क्योंकि अब 1-2 साल बचे हुए हैं, or do we sell him and take our loss? You know, like I was telling Mohak ki last year Rashford, everyone wanted Rashford to be sold. So people were Right. saying 40 million, sell Rashford. 50 Hmm. million, sell Rashford. Don't give. And as soon as he was offered a new contract, अरे ये क्या कर दिया? We've messed up and everything. Now look, he's untouchable. So giving a long contract, I think, protects the players from these ups and downs in forms. Even if there's a down, you can wait for it to recover and you don't have to think about renewing. Just Aubameyang and Arsenal, we had to renew him because he was in good form, but we never know कि कब form इतना गंदा dip हो जाए. As for ओबामियांग का तो और भी है ना, मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर्म थिंग, इसका तो मतलब ऑलमोस्ट माइंड है, मतलब सम प्लेयर्स हैव दैट थिंग आल्सो, राइट? तो वो yeah, फैक्टर इन हो जाता है थोड़ा बहुत. yeah, I बट आई think डोंट नो, once he's लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर इन सच अ सिचुएशन दक्ष कि मैं तो बोलता हूँ आई नो जाओ फेलिक्स ऑलरेडी सस्पेंडेड है इस वीकेंड के लिए, राइट? दिस इज द लास्ट गेम जब Mudrik सस्पेंशन might हो get जाएगी. suspended. You never know. हाँ, That वो एफए एलिगेशन, आई नो द ऑलरेडी that द FA investigation. इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. Yeah. डेफिनेटली. भाई वो सॉन्ग क्या So था, मतलब आई डोंट नो द song to be honest, but it was basically the n word in the song, it's right? a rap. Basically speaking. Yeah, it's a rap song. He just mouthed the N word. He wasn't even saying it in a Come on. derogatory way. But you've seen Hmm. Cavani, right? He used a word which in his language means buddy, but it has very similar connotations to the N word. And then he was banned for 3 games. So But I Mudrik thought might. Cavani also made a gesture while. No, 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 no. He posted a story which had the word. अच्छा And that's why नहीं, he was banned. स्टोरी में आई थिंक जेस्चर था, तो अनिल का डिड इन द पास्ट, राइट? आई थॉट दैट वाज आल्सो देयर पार्ट ऑफ I'm द not स्टोरी sure, एनीवे. but as far as I ओके. remember, which I found it ridiculous, was he used the या term देन which यू is a नेवर नो, term of मतलब इस endearment in वीकेंड his के लिए तो इज language. अवेलेबल एज ऑफ नाउ. आई डोंट Huh? थिंक इस वीकेंड के लिए तो वी नीड This मुद्रिक weekend ke यार, liye is मतलब. available. But या Enzo, यहाँ yeah, के लिए. what a good signing, man. I've tweeted this also. I'm very intrigued to see how Chelsea play because it's one thing to get all these players in. It's another हम्म. thing to have a training session where they all understand their roles. Because let's be honest, as much as you guys have all these players in, the ultimate goal for Chelsea is to climb as high in the table as possible this season, especially hoping to get Champions League, if not Europa League at a very minimum. Because it'll be very strange to see a 1.2 billion ka squad playing in the Conference League. So your Chelsea's point of view should be to get as high in the table as possible. Now, how do you do it? Do you stick with Potter's tried and trusted people who've been with him for many months and play a game which they are familiar with? Because this is not FIFA, right? You have Yep. Enzo, an Argentinian, who will have to coordinate with Mudrik, a Ukrainian, who has to coordinate with Badiashile, a Frenchman. Different cultures, different languages. Nobody's really aware of what each other's strengths are. You Right. don't want to. You don't want Enzo to play a pass that, let's say, Detro Fafana cannot reach, or you don't want to play passes that Mudrik is not comfortable taking on in certain positions. So you have to train Mm-hmm. these players, get them used to each other. So I won't be surprised really if you go for a very well recognized lineup which was pre-transfer window, just to the point so you can bed these players in. But यार देखते हैं कैसे चलता है. I do not expect too many changes from your last lineup. Maybe a sprinkle of players here and there. Yeah, मैं actually 11 ही बना रहा हूँ. मैं I'll just kind of put it up on the screen. Mm. And yes, of course, you're going to come to Arsenal and the other Mm. big games as well. Absolutely. Yeah. But again, I request everyone to check out A for Arsenal अगर आप लोग नहीं check out किए हैं, as well as our channels in case you're not subscribed. But यहाँ पर मैं share कर रहा था, मैं बना ही Mm. रहा था side by side. I know एक ओबामियांग वाला बहुत ही फैक्टर मैंने खुद बोला था भाई, ओबामियांग has become a fraud. बहुत जल्दी हो गया चेल्सी में fraud. लेकिन if you know, मतलब जो ये ब्रेक था ना 10 दिनों का, तो आई थिंक पॉटर टुक देम टू एन आर्मी बेस कैंप एंड स्टफ लाइक दैट. Mm. उसने बोला भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, ही Mm. डिड गिव सम गुड न्यूज अराउंड बेन चिलवेल एंड रीस जेम्स, दैट वो Good. लोग ट्रेनिंग शुरू कर दिए फुल टाइम एंड Mm. दे आर अवेलेबल Yeah. बट फॉर द बेंच, Yeah. नॉट 90 मिनट्स फॉर Not श्योर. for the start. प्रिटी श्योर हम लोग रिस्क नहीं लेने वाले विद देम बीइंग देयर. लेकिन रूबन लॉफ्टस-चीक इज एन इफ फैक्टर अभी भी यार. आई डोंट थिंक ही स्टार्ट्स. Kovacic is the biggest miss, जैसे मैं बोल रहा था, उसका calf injury. I think this is something that is happening time and again. Kante is still not fit. We all know that. As well as Mendy in goal. So I don't know. Center back options. I think the two ones again break था, तो I'm pretty sure we will not experiment यहाँ पर. But again, people in the chat or Daksh, what do you think? Mm. Any changes to this lineup that you would make if you were Potter?
In terms of availability, first of all, good Madueke, squad. I don't know, would you risk Madueke? इतना young बंदा प्रीमियर Get लीग him में in, शुरू man. से नहीं Get him है in. ना? I think, see, Madueke ka the only thing I'm very doubtful of is injury record. You Injury. yourself are available, and it's kind of like the situation we're in with Zinchenko. As soon as the player is available, just play, because the kind of injuries that Madueke gets aren't really injuries that you always exclusively take on in matches. You can get Mm-hmm. injured in training. Don't really want to have a player on the books who can't really play. Now, I still think you won't have Aubameyang. You maybe just play Havertz up top, which means I would put Mount where Havertz is. Now, who plays right wing is something I'm वो not really ये sure. मे बी Madueke is the only option because Yeah. Sterling start नहीं कर सकता. He's not fit Yeah. enough to start the games. I don't know. Let's see. बाकी With लोग भाई Aubameyang, people in I think chat. Chelsea, it looks like just Chelsea are playing with 10 players anyway. Yeah. So I would put Havertz up top. That's going to be the Mm-hmm. only thing. And then right पे आप Madueke डाल दो. That's, Yeah, yeah, I that's think what that's what I I'll would do. probably take that. But yeah, as in this one is good, यार. मतलब I know Chelsea के penalty taker भी Chelsea के तो I think Havertz should be the penalty taker. I personally feel that. Okay. I don't know about Mudryk. यार देखा है कभी Mudryk को लेते हुए Champions League में? I've not seen, to be honest, penalties. But let's see how it is. I मतलब Arsenal में currently कौन साका ही लेता है ना कि Saka ओडेगार्ड? takes up pens. Yeah. हाँ, Saka takes it. So what do you think about He that? he Like has not missed a pen since that Euros wala thing. oh, okay. Since he missed the penalty in the Euros finals, he's not never missed a penalty. But there's also a thing Hmm. we hardly get any penalties. By the way, I just So realized I put Enzo Perez. मैं बोला भाई ये गलत था 100 मिलियन साइनिंग होगी Enzo Fernandez हाँ भाई ये तो देखो the reason being yes people are shocked that मैं इनको डाला हूँ but I know पेपर वर्क अभी तक नहीं हुआ है technically speaking but as per Premier League का झंडा मिल गया है it's just that I think legally speaking he requires to be doing some paperwork which should be done overnight I believe आज और he should be playing tomorrow as per the reports latest problem है कि यार यहाँ पर आप लुइस हॉल के नहीं खिला सकते. आई थिंक फुलम जैसे बोला दे आर वन ऑफ द फॉर्म टीम्स ऑफ प्रीमियर लीग. आई डाउट इफ yeah. लुइस हॉल really is ready to play midfield. Like, what do you think? Well, I know we didn't put Lewis Hall हमारे website में नहीं. He was literally playing because of injuries, right? But I think a lot of people are इतना criticize करे ना आज आप कहीं भी Talk Sport देख लो, Sky Sport देख लो. I know that they're anti Chelsea anyway. लेकिन anywhere there you go that भाई ये Tony Pulis, remember the Stoke guy? He used to respect Mourinho like anything. Mourinho was his god. जो था. और अभी यार चेल्सी के इतने नेगेटिव बोला है कि चेल्सी डोंट वांट टू प्ले यंगस्टर्स व्हाट अबाउट दिस एकेडमी मल्टी मिलियनर एकेडमी है उसमें यूज नहीं करे भाई. चेल्सी में आधी टीम तो इंजर्ड थी और आधी टीम भाई चालोबा माउंट रीस जेम्स लुइस हॉल ये भूल रहा है क्या भाई सब एकेडमी से आया. बट आई डोंट नो लुइस हॉल what do you see himself like do you see him at Nahin, Premier League level? even if Enzo is not there, I don't think Lewis Hall will play. Maybe Chukwuemeka, if he's available, maybe he might play. हाँ चुकमेका कैन प्रोबली बी हाँ ये एक्चुअली अच्छा बोला क्योंकि व्हेन यू सजेस्टेड हैवर्ट्स बेसिकली अप टॉप आई थिंक चुकमेका माइट कम इन एंड यू कैन हैव बेसिकली यू नो काइंड ऑफ प्ले 4-2-2-2 वो कर सकता है एंड ही इज डन दैट इन ब्राइटन. ये अच्छा पॉइंट है डेरिन का. आई नो विलियन जो स्कोर किया था बाय द वे अगेंस्ट चेल्सी इन द रिटर्न लेग. And of course, an Arsenal fan would know much about Willian as well. You know why? Not just Chelsea and Spurs as well, to be honest. लेकिन भाई डेरेन मैं इतना बोलता हूँ ना चालोबा yes he probably has a pace recovery. He didn't do too badly, but he's not a right back. We are playing at the bridge. So at the bridge, I am assuming as much as Fulham बहुत possession रखी है despite the 2 losses recently, I would expect Chelsea to have more possession. So I'm hoping that we need more a natural right back to be able to put those crosses in for Havertz. So I guess that Aspi is better. अगर हम away खेलते then I would have gone Chaloba to be honest. And I know Aspi is not a starter, but हमारे पास option है नहीं. मान लो कुछ तो सबर में आ रहे Derin. That's how it is. Achilles Gaming बोल रहे Havertz should be the penalty taker. Okay. Good. Yes. No other choice to be honest. ये क्या है? Lampard said once, I want to be on the panel one day to represent Chelsea. All the pundits feel anti-Chelsea. आएगा यार वापस अब तो बेचारे के पास और क्या है क्या भाई? All the respect to Lampard आएगा. Man, He will I come to think the he needs panel a for sure. break first. But Yeah. अच्छा पुदिन बोले if Sterling plays then Sterling is the best penalty kick taker. अंकित भाई used to take penalty kicks in Man City. नहीं वो भी मिस किया यार. मैं उसको यार मतलब I remember him missing. There was a time when Man City literally Aguero used to miss, Sterling used to miss, De Bruyne used to miss. They didn't know whom to give. You know. They फिर kept Bernardo shuffling, Silva man. भी लिया था. Correct. Yeah. At one So- point, Pep was like, if everyone keeps missing, we'll have to have Ederson take it.
So That I would have think been that is insane. what. So I think I doubt it. Lekin again Sterling शुरू नहीं कर रहा. That's why I said Enzo likes to spread up the pitch. That's why player like Mudryk, Madueke, Chukwuemeka should play in the wing. हाँ, by the way, Mudryk का Daksh, I don't know you, but I was surprised with one thing. I know it was just a cameo against Liverpool. लेकिन the guy is actually not too bad defensively. मतलब he does the dirty work. At least पहले मैच में तो लग रहा था. Hopefully वो into रहे, and Yeah. that actually helps. Let's see how it goes, because well, I'll be honest and throw in a word of caution to everyone who's a Chelsea fan here. First games are very deceiving. We had a beautiful first game by player called Pepe. Absolutely destroyed Van Dijk on that one dribble, and we're like, oh damn, we have a baller. And then so did Dani Ceballos in his first cameo substitution Correct, appearance. correct. Yeah. So yes, I think first game mein all players are eager to make an impression, because that's their first chance for the coach to see what they do in Zeal is real time high. situations. And all I'll say is this: Arsene Wenger put it very beautifully. It does not matter that is the intensity of the motivation. It matters what the consistency is. You would want Mudryk to do all these things consistently over a period of time. But the good thing about Mudryk is वेरी हार्ड वर्किंग फेलो. हम मतलब आर्सेनल फैंस ने इतना स्काउट कर लिया था मुद्रिक को, एंड आई कैन टेल यू उसके कोचेस से लेके उसके फिटनेस इंस्ट्रक्टर से लेके इंटरव्यूज करे थे आर्सेनल फैंस ने. ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग फेलो. ही इज ऑलवेज इन द जिम. यू मस्ट हैव सीन, अब मेरे को पता नहीं आपका क्या था, बट you must have seen him staying in training after everyone's left, Oh practicing yeah, something or the already. other. और वो प्रैक्टिस कर रहा है बहुत एक्स्ट्रा शॉट ऑन टारगेट विच चेल्सी प्लेयर्स हार्डली लेते शॉट्स. एंड टॉकिंग अबाउट फर्स्ट गेम ना, बाय द वे बिग अप टू मानव बीआर मानव एक्चुअली इज गेमिंग देयर इन अगेन ऑल द मेंबर्स एंड मॉड्स भाई टू हेल्प मी आउट हियर, बट डेफिनेटली मच लव टू हियर. मैं आ रहे कमेंट्स में आ रहे. क्विकली मैं बोलना चाहूंगा यार, फर्स्ट गेम मुझे याद है थियागो सिल्वा का, याद है पहला गेम अगेंस्ट साउथहैम्पटन था जहां तक मुझे याद है, एंड इट वाज इन द लीग एंड ही डिड टेरिबली. he did terribly. तो people jump the gun. तो other way around भी ट्रू होता है. तो कहीं ना कहीं but you have a point certainly. अभी यार सिचुएशन ऐसी ना चेल्सी की कि अनफॉर्चुनेटली विद एंजो फर्नांडिस एंड मुड्रिक वी हैव टू प्ले. वी लिटरली डोंट हैव एनीवन. मतलब आज इवन फ्रैंक लेबोफ का देख रहा था मैं इंटरव्यू भाई, इवन ही वाज क्रिटिसाइजिंग. एंड यस देयर द वर्ड ऑफ कॉशन अबाउट मेकिंग दिस बिग साइनिंग्स जो लैम्पार्ड के सीजन में भी हम किए थे. इतना नहीं किए थे बट डेफिनेटली वी डिड सेकंड सीजन. एंड आई नो दैट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू जेल क्विकली, बट एट द सेम टाइम यार एक्साइटमेंट तो है. इतना झूठ नहीं बोलूंगा, एक्साइटमेंट. क्योंकि यार 10th होकर क्या तो एक्साइटमेंट थी यार दक्ष. तो वी गॉट एटलीस्ट सम एक्साइटमेंट एंड अ लॉट इन फैक्ट टू बी ऑनेस्ट एज अ चेल्सी फैन. Yeah, fair But enough. anyway, Yeah. Chelsea can only register 2 players from new signings. If this is true, then who? लीडा मैंने एक वीडियो आज ड्रॉप किया है, डू Champions चेक League दैट का. आउट. पूरा एक्सप्लेन किया उसमें. बेसिकली इट्स 3 players and not 2, क्योंकि वी कैन रिप्लेस द गोलकीपर विद द लिस्ट बी गोलकीपर. तो अनफॉर्चुनेटली फॉर बेटिनेली एंड फॉर स्लोनिना, लेकिन अगेन वो वीडियो चेक करे. वो इट्स नॉट जस्ट फॉर चेल्सी. मैंने जनरली यूसीएल रूल्स एक्सप्लेन किया उसमें. सो डू चेक इट आउट आफ्टर दिस Yeah, स्ट्रीम. I saw that एब्सोल्युटली. video. Very nice video. Thanks man. As Danny Ceballos didn't extend till now, do you wanna हाँ यार ये interesting question है. Coming to Arsenal quickly, what do you think about Danny Ceballos? He's doing well in Real Madrid. He's doing well, but I think he's done. I don't think he wants to return to England anyway. That aside, I would say this summer mein our primary targets will be Rice and Caicedo. And Ceballos is like, if agar un dono mein se ek nahi chala, then maybe we can think about it. But I know for a fact we will go all guns blazing for Rice and Caicedo, because one, Caicedo is not going to be as expensive jitna January mein tha. Do you think so? I think it'll be a bidding war rather. Could be a bidding war, but I think if the player has his heart set and everything ना, जिससे उसके agents जैसे उन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया है, I think he'll be not that expensive. Brighton को इतनी desperation नहीं होगी. Maybe throughout till the summer they will scout another player they can replace Caicedo with, some dude from the Peruvian second league who they'll buy for 1 million and then 10 years later to 3 years later sell for 100. Yeah, that's Brighton for you. भाई That's बिटोमा मैन, हम एफपीएल के बारे में बात करने वाले टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम. तो बने रहना भाई, ऑल एफपीएल गुरुज एज वेल. भाई डेफिनेटली टाइगर बीस्ट, थैंक्स फॉर सेइंग दैट. आई 100% agree with टाइगर बीस्ट यहाँ पर एब्सोल्युटली. और अगेन आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हियर विद दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब. मैं दक्ष का चैनल भी टैग कर रहा हूँ राइट अवे, तो भाई डू सब्सक्राइब टू हिम एज वेल एज अस इन केस यू आर नॉट. बट अगेन मतलब लेट्स कम टू द प्रेडिक्शंस यार. आई नो हमने स्टार्टिंग 11 कर दिया है. Come on, अभी it's a must win for Chelsea. हमें अब बोल भी नहीं सकते कि option है, 100%. right? Yeah. But what are you going for? Scoreline predictions. Everyone in the chat, and Daksh, come on. Chelsea versus Fulham. If you play the squad that played in the last game week, then I see a 1-0 or a 2-1 for Chelsea.
if you play new players, if half of your team is new, then I see you losing or drawing. I think it'll Oof. gelling issues will be there. I think there'll be too much pressure on these players to perform and the manager to use them. I think Mhm. it's not going to be about quality. On paper, definitely Chelsea is stronger. I just think Fulham ki side itni well gelled and settled hai that if you change too many things too soon na, Yep. कब जनवरी फर्स्ट कब कल ही था फरवरी फर्स्ट कल था 31st परसों ही था 2 दिन में आपके प्लेयर्स इतने वेल जेल्ड नहीं होंगे अगर होंगे तो कमाल की बात है बट I think it's going to be 2-1 to Chelsea and I think you're going to be mostly an unchanged squad 2-1 Chelsea. चलो भाई, विल गो विद दैट। अभी तो भाई हुक बाय क्रुक, आई जस्ट नीड द विंस। हाँ, Yeah, yeah, वो इवेंचुअली 100%. इट टेक टाइम, लेकिन अगेन मैं यहाँ अगर अगेन जैसे दक्ष ने बोला ना, देयर इज अ वर्ड ऑफ कॉशन। आई नो अनमोलदीप आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो और आप बेसिकली पंप अप कर रहे हो हम चेल्सी फैंस को, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अनमोलदीप बोल रहे दैट वी प्रोबब्ली कैन विन एवरीथिंग, इट्स टू अर्ली। मतलब इफ फुटबॉल वाज सो इजी, यू नो, एवरीवन वुड हैव प्रोबब्ली जस्ट गॉट अ लोन फ्रॉम समवेयर, इन्वेस्टेड ऑल द मनी एंड देन गॉट इट। इट्स नॉट इजी मैन, Mm. ट्रस्ट मी, Yeah. इट्स नॉट इजी। स्पेशली आप हमारे वही, इसलिए मैं जो चैंपियंस लीग वीडियो किया ना, द आइडिया वाज दैट वी हैड सो मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम अदर लीग्स एंड इट्स even more difficult. As much as very nicely Daksh put, like Mudryk, Felix, Enzo Fernandez are great names on paper, and of course वो दिख रहे भी है as they're very good in form as well. And Enzo Fernandez, yes, एक game miss किया था Benfica के लिए. I think he's played decently before that last few weeks. So, but coming to England, it's a different ball game altogether. But again, all of them are going for a Chelsea win at home. Looks Good. like it. Koulibaly और Sterling का क्या होगा आशीष? मैंने देखा था आपको comment. Sterling is it's too early. I know that Sterling का hit and miss रहा है. I will not lie, but at the same Mm. time, it's been what, 5 months? It's too early for him. Or also, मतलब 5 months में से 3 months के लिए तो he didn't play in his position also. I thought. I don't think he Mm. played Sterling rightly. I thought, but let's see. Injured हो गया था then, and coincidentally, I think the match he got injured in, before that he actually had a good game. Koulibaly, all the Italian fan experts also are saying that Koulibaly ka probably the best is past him, or maybe he's just too zealous. Mm. Again, surprising that Koulibaly को हम नहीं replace कर सकते Badiashile के साथ in the Champions League squad, but let's see what happens tonight. Mm. And yes, उसके लिए deadline आज रात को, just वाला says 2-0 to Chelsea. Okay, let's go with that. And yes, bhai, we'll come to the big game as well. Of course, the Spurs versus City game as well as the Milan derby. But since we have Daksh in town, obviously, भाई बात तो करनी है. But Arsenal against Everton है भाई. So it would have been nice to see Lampard, लेकिन unfortunately Lampard is not there. तो भाई क्या ही तो बोल सकते हैं. शॉन डैश का मैं इंटरव्यू देख रहा था आज भाई. बंदा तो मतलब he's not changed one bit. He's like literally just गया है और वैसे ही आया है. He's like I don't care whatever आप लोग बोल रहे हो. यहाँ पर जो अपना क्रिकेट टीम का जो होता है ना, रोहित शर्मा को he has to do a yo-yo test. And that is what basically he had to do in Everton as well, it seems, Yeah. for him to prove his fitness back. But anyway, jokes apart, एक चीज जरूर बोलूंगा, Everton haven't signed a single player and they've let go at Anthony Gordon. But Yeah. under Sean Dyche, he goes that 4-4-2 system. Or has Arsenal been tested that way in this season? मतलब as much as they have been tested a lot, लेकिन 4-4-2 system, proper old school football. Do you recollect a game? Mm, well, there are a few things which work in Arsenal's favor. There are a few things which work against us. Things that work in our favor: we have better players, we have a cohesive system, we have played teams that like to set back. We're on form. सब बढ़िया चल रहा है on that front. Things that work against us. Sean Dyche right now in this game especially is not here to win. He is here to number one, figure out his best 11, and number two, build some momentum to keep them up. Let's be honest, he's not up there to get into the top half of the table. He's just here. Even if he's 16th, he is happy. So he is here to just save Everton from relegation. What does that mean? You get whatever point you can against the biggest teams possible, and you win the games which are winnable against relegation fodder and teams just above you. That's how you protect yourself. You keep Yep. yourself away from the relegation teams and you win छोटे एक दो teams जो आपके ऊपर हैं. So he's not going to go for a win, which means he will try every tactic to slow the game down, to disrupt our attacking flow, something which Newcastle very successfully did. Whether it's conceding fouls, committing fouls, time wasting, not letting us get to our strength. Another thing which works against us is history. Last season, Everton had not won 6 games in a row before they played Arsenal. Sorry, Yep. 9 games before they played Arsenal. Then they beat Arsenal 2-1, and then they lost their next 6 games.
So in a game of 15 games, they lost 14 and won one, and that was against Arsenal. So we have a tendency to sometimes just get a little complacent और बाकी टीम्स को आप अंदर आने देते हो. So yeah, like Darren is saying, Shondage masterclass, it's not going to be a surprise to me. But the thing is, yeah, there is such a negative, toxic atmosphere at Everton right now. No, I don't expect anything good to come out of these games. Mhm. Abhi news आई है. Andre Ayew instead of going to Everton is going to Nottingham Forest. So they ओ can't even. हाँ नॉटिंघम फॉरेस्ट भाई 30 पहुंच गया क्या उनका टोटल साइनिंग्स फॉर द ईयर? No idea. No idea. I think it's just if they can't attract free agents and that too Andre freaking Ayew, तो यार कुछ तो है उस क्लब में that everyone wants to stay away from Everton Right. right now. नहीं So अलग I don't know if people from Liverpool side are seeing this, but honestly speaking, let's be honest, when things go bad, no toxic atmosphere तो है. मतलब under Benitez, I remember it mm, became so bad जब Lampard had taken over. I remember yeah. like crazy. I had got a local Everton fan, as Hmm, in from there, on the channel, and he right. was like talking and literally shared a lot of experiences. People who are interested can go back and check it out. This was, I think, same time around last year, or was it the previous year? Basically speaking, he said about some of the instances which happened, incidents Yeah. on the pitch and off the pitch. It was crazy to hear. So I think that is why Sean, they needed a person like Sean Dyche, because वो shit houser ही रखता है, बंदा है वो ऐसा. तो कहीं ना कहीं it helps, लेकिन वही immediate वही करेगा जैसे दक्ष ने बोला. He'll probably put that, वो बोलते हैं ना, two banks of four, and go with that, and work with that. Having अगर said एक that, पॉइंट मिल गया तो मिल गया, हार गए तो हाँ. चलो, हारना तो दे एक्सपेक्ट टू लूज, बट हम्म. even a draw would be a great win for them. So they're not And looking out I'm just to. seeing here, Daksh, यहाँ Yeah, पर Everton have won 3 of the last 4 EPL matches against Arsenal. You're right. So yeah, yeah. basically, there is something against. It's a bogey side almost. You Bogey can say team. that, Yeah, right? bogey team. Hmm. But anyway, I think this is what in it's an Goodison पे away है. game, right, for Arsenal. So it's at Goodison. Okay, yeah, that also makes it a little bit difficult. But we all know, यार, अगर by chance remember, if Arsenal are able to, I think 6 बजे है अपना time में Saturday को. Mm, So if this happens, like Arsenal are 8 points clear with the game in hand. Wow. Oh yeah. man, that is something to be said. I have to say that. Surely envious. Tiger Beach का देते हैं question. How do you Yeah. rate Arsenal's bench strength, Daksh Bhaiya? Mm. Are you confident, as in injury wise? And of course, what about the Jorginho? As in, where do you see Jorginho coming in? In what point of the game, or maybe in certain games you see him starting? What are you seeing? There are two roles I think that Jorginho will fulfill in this Arsenal side. Number one, you can't expect Jorginho to do party things. He's not as physical, he's not Mhm. as quick. But what Jorginho enables us to do is let Partey be Partey for the longer part of the season. You can't have Partey playing Abhi, then on a Thursday in Europa League for 80 minutes, and then back again on the weekend, because then his hamstrings will blow. What happens is when you have teams, let's say there is a game week where we play City and then midweek we play Brentford uske baad. In games like that, when we want to control the game, or maybe when Partey is not fit for too high intensity games, then you bring in Jorginho. You also bring in Jorginho for his leadership. Last season, we crumbled in April because the pressure and intensity got too high. Jorginho stops that. He takes the sting out of the game, he slows it down, he ticks the ball, he recycles it really well. And Arteta इतना बड़ा fan था Jorginho का इतने time से. I was reading one of his interviews where he was talking about the ideal number 6. So you can't expect him to smash into tackles like Partey, break up play, but you can expect him to relieve the pressure maybe जब कोई टीम हम पे ज़्यादा प्रेस कर रही हो. You can expect कि अगर हम लग रहा है कि यार गेम हमारे हाथ से निकलने वाला है, जैसे अगर आपने यूनाइटेड वाला गेम किसी ने देखा, यूनाइटेड आर्सेनल का, टुवर्ड्स द एंड हम यूनाइटेड पे चढ़ चुके थे. एंड Right. अगर हमारे ऊपर सिटी जैसे कोई टीम चढ़ जाती है, वी नीड अ प्लेयर लाइक Mhm. जॉर्जिनो टू जस्ट receive the ball under pressure, pass it along, move it, and just take the pressure off. That's it. So Jorginho will be great. It's better than Partey to Sambi. It's much much better than Partey to Sambi, and I think it's a great addition. पहले मैं भी थोड़ा shocked था. I could not do it, but then मेरे को याद आया, trust the process, trust the manager, and बस यही होता है भाई.
हाँ मतलब पहले तो हम मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा इट वाज बेसिकली वन ऑफ दोस थिंग्स यूज्ड बाय ऑपोजिशन फैंस अबाउट ट्रस्ट द प्रोसेस ट्रस्ट द मैनेजर बट इनफैक्ट उसका जो फोटो था ना अबाउट दैट बोर्ड जो बोर्ड में उसने लिखा है दैट वेंट वायरल आई रिमेंबर दैट बट अगेन वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट आर्सेनल आर डूइंग राइट नाउ yes I know अभी तक जीते नहीं ट्रॉफी but that is what I think the board has backed Arteta as well तो कहीं ना कहीं I वेरी think you have to डिफिकल्ट give the credit सर्कमस्टांसेस में विच इज व्हाई आई मतलब थिंक अभी जब ये पॉटर भी ले गया था आर्मी वार्मी पे अब सब कह रहे आर्मी में ले जाके क्या होता है वेल या बट माय मैनेजर यूज्ड द लाइट बल्ब टू शो यूनिटी ब्रो and look at where yeah we are 1 year later. So these things are some things which might not make sense to us on face value, but ये लोग talented लोग हैं. They've done management courses, they've done leadership courses. They have to motivate these teams. It's not enough to go into a dressing room and say आज हमें गेम जीतने भाई लोग, and then आप इसको 38 गेम तक खींच के लेके जाओ, because players also need a refresher in different ways to motivate themselves. So sometimes you need to go to an army camp. Maybe they will talk about how difficult situations में साथ रहना is a very crucial thing. Maybe it gives perspectives to these football players कि उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है from people who are in the armed forces, whatever it may be. हमें सब ये सब समझ नहीं आएगा on the face आज value. एक और देख रहा था मैं आई थिंक देयर वाज वन मोर राइट वो वाला जो है ना जो डक वेदर इट्स अ रैबिट और अ डक वाला आई Yeah, थिंक दैट इज आल्सो आई वाज जस्ट वाचिंग इट लाइक कहीं ना yeah, कहीं दैट इज समथिंग दैट वी यूज्ड टू सी इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट बट एट द एंड ऑफ द डे मतलब दैट इज द होल पॉइंट देखिए मतलब यू हैव टू बी नोइंग टू यूज इट एट द राइट मोमेंट और ऐसा yes, भी नहीं है पीपल माइट से कम ऑन यार पेप के साथ सीख कर रहा है बट प्रीटी श्योर आर्टेटा हैज हिज एलिमेंट आप yeah, yeah, yeah. नहीं बोल सकते जब सिटी और बाय द वे ये कोइंसिडेंस नहीं है रिमेंबर व्हेन Arteta was in City. I think it was his first year. There was no coincidence that Jorginho was linked strongly to City as well. I think हाँ, there is some connection, or I think he wants a plan B, एक calming effect और एक leadership को value करता है वो. I know that hmm, Aubameyang वाला चीज अच्छा नहीं हुआ, but that is something that was Aubameyang's fault as well. You cannot say hmm. that it is just his. So I think at the end of the day we have to agree to that. But yes, LM10, hopefully yeah, Daksh is good, bro. Absolutely. Again, I'm nice to see amazing you भाई, as thank well. you Ellington. भाई चलो यहाँ पर बिफोर कमिंग टू दिस कमेंट भाई लेट्स गो फॉर अ क्विक प्रेडिक्शन एंड भाई स्टार्टिंग 11 बता दो मतलब यू आर गोइंग फॉर एनी चेंजेस और यू गोइंग फॉर द ट्राइड Same एंड टेस्ट इट starting 11. या We have अगेन Nketiah Ramsdale. has done brilliantly bro I must Yeah. say Yep. Ramsdale, Ben White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Martinelli, Eddie, Saka. Good news though, Reece Nelson is back. Good news. Gabriel Jesus has started training. He was on the field today. So Eddie Nketiah has pretty much handled it all really well in Gabriel Jesus की absence. जब Gabriel Jesus आ जाएगा तो और भी strength improve हो जाएगी. कुछ लोग कह रहे थे ट्रॉसार्ड को स्टार्ट मिलना चाहिए. नहीं, I don't think so. I think let's go for Martinelli. हाँ this could be that मैं देख रहा हूँ can you see Trossard being a false nine kind of a thing does Could be. Arteta believe in that Gabriel Yeah, Jesus he also can. kind of Yeah, है ना yeah. So Trossard के साथ we can play left. He can play left. He can play center. He can play the 10. And if it's very desperate, he can play the right wing as well. But he prefers the left. I think Martinelli के साथ ही जाएंगे. Got it. Everton will pull a shocker win. नीरज बोल रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन द हाउस अगेंस्ट आर्सेनल दिस वीक न्यू मैनेजर बाउंस देखिए यार नीरज मैं अभी बोला ना जो अबाउट दैट फॉल्स नहीं था आई थिंक द आइडिया इज फॉर मी आई एम एक्सपेक्टिंग शॉन डाइस टू काइंड ऑफ गो ओल्ड स्कूल एंड जैसे दक्ष ने भी बोला दैट ही माइट गो फॉर दैट वन पॉइंट even though at home to get a start and then kind of build on it against league leaders Arsenal. तो दैट इज व्हाई आई थिंक थोड़ा सा प्लान बी को यूज करना पड़ेगा आर्टेटा को बट वही व्हाई चेंज व्हेन थिंग्स आर वर्किंग सिंपली यू कैन आल्सो आर्ग्यू दैट तो यू चेंज ओनली आफ्टर एन आवर और सो but for now I think it'll be good but I feel that I would go with Daksh's lineup as well this guy yaar we have to talk about it पता नहीं आपने देखा है कि नहीं भाई the young 100%. how do you pronounce it Rame the club Rhyme, that he's rhyme. at राइम ओके Yeah. सो भाई जो मैनेजर एक तो भाई उसके पास लाइसेंस नहीं है उनका जो मैनेजर है Will and still. he's there and you know what they are literally paying like thousands of bucks bro for every match as a fine but the guy is getting good results लेकिन he owes it to Balogun Yeah. or the other way around I don't know like this guy is actually doing well like कहीं ना कहीं has it actually helped you because you in the past you've not gone for Vlahovic and then remember Vlahovic नहीं आया था Yeah. तो Yeah. Vlahovic not coming now Balogun like do you see him kind of being a part Oh, 100%. देखो, it is very good for us to be blessed with 3 strikers. And Balogun, he was one of our academy. I think he's probably the second or third best academy graduate that we've had from Haaland. Initially, जब आया था, he went to the championship. He was okay there. He tried playing for Arsenal, but physically उतना developed नहीं था. अब he's playing senior minutes. He's playing against big men. French league,
सब कहते हैं फार्मर्स लीग है, बट बाकी टीम्स तो एक दूसरे के अगेंस्ट compete करती ही हैं, चाहे आप पीएसजी के अगेंस्ट नहीं करो. एंड टू बी, देखो, देयर आर टू वेज टू दिस. यस, ही इज डूइंग ग्रेट and I'd be very happy if he comes back at a very well developed player. Having three strikers, if you're especially in the Champions League, you want to fight for another domestic trophy plus the Premier League. It's very important. City के पास भी एक टाइम पे Balotelli, Dzeko, Aguero, God knows Tevez, ये सारे थे. हम लोग के अंदर डॉन हाँ, कार्लो जब था, we yeah, used to have exactly. literally everyone. So it's important to have this depth, yeah. And worst case worst, if we have to accommodate Jesus plays in the right as well. Right wing खेलता था वो City के लिए काफी time, so we can just move him to the right, give Saka some rest. It all does work out. So I see him coming back. I don't understand the calls for people saying इसको बेच दो for पैसा. I think we can, but then I don't understand if you're saying कि we can sell Balogun, then why do you want Vlahovic on a cheap, right? You have a home ready-made guy from your academy who knows what's the club about, who's very young. I'm not saying he's Vlahovic good, but you can turn him into your own Vlahovic, right? This is, Yep. ये अगर ब्राइटन का प्लेयर होता तो सब अरे वाह, ब्राइटन हैव ये पहले स्काउटेड द मिडलस्ब्रो में था क्या Balogun? Where did he he go was in known? Bulgaria. There also he performed decently, right? Yeah, he performed really well. But वो जब when he came back, no, he wasn't that. Still physically he was lacking. Now I think Correct. he's doing really well. His finishing's massively improved. His physical strength is massively improved. So this loan has worked out really well. He's worked out really well. Pepe is doing fine as well in the French league. Nuno Tavares has transformed himself into a very good player. He has gotten so many goals. एक assist भी आया था. Now he might turn लेकिन into वही a है ना दक्ष, देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू लीगा yeah, एंड डेफिनेटली exactly, काफी फिजिकल फुटबॉल होती है. 100%. I जो think the P test for yeah, Balogun was against PSG in a sense. I know PSG की defense you can still question mark, yeah, थोड़ा सा बोल सकते हो, लेकिन big game mentality जो बोलते हैं ना, yeah, जो आर्सेनल में kind of missing लग रही yeah, थी मुझे when he came yeah, back. I think that game and I know it was not just the goal जो हुआ last minute में yeah, जो equalize हुआ. I know they were down to yeah. 10 men PSG. Hmm, Verratti hmm, was hmm. sent off, but I still feel that पूरे game में I was seeing that the guy was making those crazy runs, which is so, Yeah. I would say maybe old school kind of runs that I know what he you mean. is good. Hmm. But this is a good question from LM10. Now that Nketiah has shown what he's done, if you Hmm. are Arteta, मतलब, would you want to change that and get Gabriel Jesus as soon as he comes? I think अभी भी time है, लेकिन what are you saying? क्योंकि the way that you play is kind of different with the Yeah. Gabriel Jesus around. That's the thing. It's always nice to have options where you can approach a game in different ways. If you have a team which is sitting back, like let's say this Everton game, you would need a player who's great with his feet, who's not a finisher, a fox in the box type, because you have very big troubles getting into the box. You need a Gabriel Jesus who can wiggle it past, maybe draw in a couple of players and play a release pass through Martinelli, who can probably finish. So different players for different games. I think it'll depend a lot on players, but seeing how Mikel is, no, to be honest, as a manager, he is committed to a system. So Tierney, no matter how good of a form he is in, Zinchenko जैसे fit होगा, Zinchenko खेलेगा, because Zinchenko brings things to the system that Arteta wants to play. Tierney is good, no doubt about it. I love Tierney. बट जिनचेंको अगर फिट है तो वो खेलेगा, एंड सेम विद जेसूस. जेसूस फिट है तो वो खेलेगा. सो इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट आई वांट, आई वुड टेक इट गेम बाय गेम. इफ इट्स अ गेम अगेंस्ट a team which we really need to press, then you take Eddie, जिसमें आपको finishing की जरूरत है, whatever. If it's a team which is sitting back, you take Gabriel Jesus, or you put Gabriel Jesus against a Bournemouth, against a Nottingham Forest, all of these things. And last thing before I stop this thing, कि जो बालोगुन का स्कोर है, इट्स इंप्रेसिव, बट लेट्स नॉट फॉरगेट, जैसे अंकित भाई ने कहा, इट्स द फ्रेंच लीग, लाकाजेट के भी 12 गोल्स हैं. So that भाई, tells you all you need to आई do. नो थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन है. आई थॉट लाकेजेट वाज अ ब्रिलियंट नेचुरल स्ट्राइकर यार. मतलब एक होता है उसका बहुत गंदा रन हुआ था, वो नहीं डिनाई कर सकता था. मतलब वो मतलब भूल गया था कैसे गोल करते. लेकिन एक नेचुरल स्ट्राइकर जो बोलते हैं ना, जैसे हम, आई नो वेरी डिफरेंट प्लेयर्स, बट टीमो वर्नर, रिमेंबर टूकल जब भी इंटरव्यू देता था, ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट टीमो वर्नर, सेइंग दैट भाई द गाय हैज बीन स्कोरिंग गोल्स सिंस ही वाज 5. Yeah. I think Lacazette comes in that bracket for me. The guy, मतलब हमेशा, मतलब देखो ना, natural strikers जो होते हैं ना, Yeah. they score. But somewhere down the line, it was confidence, सच में बोलूँ तो. But anyway, Yeah. I think it's just the Arsenal का वो period भी ऐसा था ना, तो it was changing. But Bipra, Yeah. भाई, Bipra, because to be honest, Bipra has been really very
सपोर्टिव विद द चैनल। I तो love भाई कोई Luka, नहीं, man. I love मतलब Luka. आपका टाइम है भाई, कोई नहीं, दिखा देता हूँ भाई आप लोग भाई। आई नो चेल्सी फैंस एंड स्पेशली लंडन राइवल्स डू नॉट Hmm. लाइक इट, बट इट्स अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। दे आर टॉप ऑफ द टेबल यार अभी यार, लेकिन फिनिश नहीं हुआ, इतना जरूर बोलूंगा, इसलिए मैन That is सिटी true. वो Yes. गेम्स Yes. बाकी है, तो रिमेंबर दैट Hmm. दैट इज अ बिग डील। बट एनीवे, वुड यू बेंच, नहीं वो तो हमने बात कर लिया था ऑलरेडी, एंड आई थिंक बैलेगन और इनकेटिया वुड टेक अ ब्राइटन मूव और समथिंग, बिकॉज clearly will not start over Gabriel Jesus. They would not want to stay here as backup. I think it also depends on Trossard if Arteta uses him as a false nine in games, or maybe even a Martinelli. I know आजकल तो बहुत अच्छा करता है as a left winger. I would consider him as a left winger, but you know that Martinelli when young was a striker as well. So कहीं ना कहीं it also depends on whose defensive work rate is Hmm. better. Like he in the long run he prefers Trossard on the left wing or Martinelli. I I think. think all three will be there at the club. Dekho, Hmm. one thing which Lacazette said in his interview after he left Arsenal was that, oh, I've spoken to a few players, youngsters at Arsenal, and I've told them the grass is not always greener. So you try to stay at a big club. Even Jack Wilshere, when he left Arsenal under Emery and went to West Ham and then Bournemouth and all these clubs, he said, my biggest mistake was leaving Arsenal because you underestimate the value. I understand players want to play regularly. That's true. But sometimes the quality of the clubs also lets you down a lot. If you go to a club which is not performing well, not conducive to your system, you are playing, but then you don't have the quality to surround yourself with that will bring the best out of you. Mm-hmm. फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक वो तीनों रहेंगे, स्पेशली बालोगन Mm-hmm. एंकेट, ये दोनों बहुत यंग है, 21-22 साल के हैं यार, अभी तो पूरा करियर पड़ा है उनका आगे। और कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई वुड से फॉर एनकेटिया, दैट ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन इट हम्म। मैटर्स राइट नाउ, क्योंकि या। नेक्स्ट सीजन व्हेन यू आर बैक इन द यूसीएल, यू नो लाइक फुटबॉल के बोल रहे, आई थिंक इट विल बी कंपटीशन एज मच एज वी आर नॉट सीइंग दैट। आई थिंक एक हॉर्सेस और कोर्सेस जो दक्ष ने बोला था, इट मेक्स सेंस। या। गैब्रियल जेसस ऑब्वियसली इज अ प्रेफरेंस यार इन बिग गेम्स अभी के लिए, बट वही है, एनकेटिया हैज डन वेल इन दीस बिग गेम्स एज वेल, तो यू कैन नॉट से नो। या। भाई आर्सेनल ओनर्स मतलब दे डू राइट, मतलब वी हैव ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस, बट डू यू फील दैट it's going in the right direction, or do you feel ki nahi, that is still an ongoing problem? Mm, here's the thing, the way Cronky Sports enterprises work is they have to have a financial model which is sustainable. One, that's of course very common thing to say. जब उन्होंने पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे, they did not have their people there. The board which was there, which was a legacy board, आपके लॉर्ड शुगर वगैरह ये सब थे. Now you have Tim Lewis, ये सब वो सब. People from Arsene Wenger's era have all left. Now it is a new board which is established by Kroenke. In fact, Stan नहीं, अब तो Josh Kroenke, उसका बेटा संभाल रहा है. Kroenke is still out. Well, you can't really fault them from the ambition, right? We have been improving. He has backed Mikel. He's doing decisions which are in the best interest of the clubs, and sometimes the decisions are unpopular with the fans. So I would say not out because he's backed the club. जब वो full time owner, they were not the full sole owner of Arsenal. Then they refused to put any money. Then they bought out everyone else's shares. Now they're sole shareholders, sole owners of Arsenal, and now they're molding Arsenal into an image which they do to their other sports brand as well. Denver Nuggets doing so well themselves. Um, Rams का stadium, oh my god भाई, SoFi Stadium is an insane stadium. So धीरे धीरे उनके पास plan है, they'll make it work. They're putting the right people in place, from Tim Lewis to Vinay Venkatesham to Edu to Art Mikel, whatever it is. Ab I think the owner situation can be a lot more calm. Yeah. Having said that, yes, I know काफी लोग यहाँ Chelsea fans and Man City fans are also in the house waiting for those Yeah, matches. man up. Like I've been saying, by these streams that I do basically, a day before the weekend, yeah, हम literally we cover every game possible on the weekend, not just EPL के, but other leagues as well. So we'll come on game by game. हमने बात की Chelsea for the first 35 minutes. For the last 20 minutes, we've been speaking Arsenal का game में prioritize कर रहे as Daksh is here. But talking about जो change in management है ना भाई, I am glad to say फाइनली चेल्सी का जो लग रहा है ना, वो जो एकदम ही होता है ना, एकदम उखाड़ फेंका है, मतलब आया टॉड बर्ली एकदम उखाड़ फेंका था सब चीज, भाई जाओ तू जा, चलो तेरे को जाना है तू जा, ये निकाल दिया। मेडिकल टीम हो गई अभी, स्पोर्टिंग डायरेक्टर हो गए, टेक्निकल डायरेक्टर, एवरीवन हैज कम इन एंड रिक्रूटमेंट वी ऑलरेडी सॉ दैट हैज टेकन प्लेस। सो भाई टुडे इट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द क्लब एज वेल फॉर पीपल हु डू नॉट नो दैट यस वी आर हैविंग अ टीम रेडी, दे आर गुड टू गो। तो यस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनाको, लाइप्जिग, ब्राइटन। क्या आप एसोसिएट करते हो तीनों क्लब्स के साथ? आई थिंक एक होता है ना स्काउटिंग ही नहीं, बट जनरली द क्लब इज बिल्ट फॉर द फ्यूचर, दे ऑलवेज काइंड ऑफ लुक एट द फ्यूचर, सो दैट इज समथिंग ग्रेट जो चेल्सी में नहीं दिखता है।
अपार्ट फ्रॉम द लोन आर्मी थिंग, जो आज ट्वीट भी किया था दर्श को कि यार अपार्ट फ्रॉम द लोन आर्मी थिंग, एंड यस उस पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं। आई थिंक हमने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया फॉर द फ्यूचर प्लानिंग, एंड वी हैव बीन Hmm. शॉर्ट टर्म सक्सेस व्हिच हैज बीन गोइंग इन गुड स्टेट, सच में बोलो तो। लेकिन Hmm. कितने देर तक चल सकता है वो, राइट? तो लेकिन टॉकिंग अबाउट लोन आर्मी यार, बाकायोको यार भाई साहब, Sad बाकायोको for him. एक और फेल हो गया भाई। दिस गाय नो वन वांट्स हिम, आई डोंट नो, मतलब ऐसे लोग चेल्सी में, तो हम एफएफपी में आज भी रिपोर्ट आई थी कि यार वी माइट हैव टू सेल ईदर ऑफ गैलेगर और आरएलसी और बोथ एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो, बिकॉज आई थिंक वो सीजन जब काउंट करते हैं ना एफएफपी पर, आई थिंक दे काइंड ऑफ काउंट टिल द end of the transfer window. So basically, the next season starts on September 1st or whatever the date may be, or mid August. So technically, we might be able to escape that अगर हम sell करते one of our academy graduates here. But anyway, Hmm. गौरव तो बोल रहे भाई 10 plus goals every match. बहुत optimistic है, I love that. भाई हमने, जहां तक मुझे याद है, 8-0 से बेटर में हमने स्कोर ही नहीं किया कभी। विगन, Hmm. आई रिमेंबर द गेम जहां पर हमें चाहिए था एक विक्ट्री इन द लास्ट गेम ऑफ द सीजन, एंचेलोटी का सीजन था, एंड वी वेंट एंड बीट द मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड इन द टेबल। Hmm. और हमने, आई थिंक वी बीट विगन एंड वी बीट एस्टन विला इन द सेम Hmm. सीजन। आई थिंक 2 बार हमने 8 गोल्स मारे थे, बट आई डोंट रिमेंबर। ऑल आई रिमेंबर सिंस दक्ष इज हियर is the 6 goals we scored Shut up, when man. RC was there. Was a legend still, I have to say that. भाई वही है, good, we can only banter with memories। अभी तो दक्ष has all the point to banter, but कोई नहीं, But yeah, to be we honest, all are I will joking, just, you all know that. Why I does will money just, spending means you will score? Exactly, that yeah. doesn't mean that, to be honest. But again, let's move on people, again people, Hmm. Everton Arsenal, do let me know your score line। तो क्या आपका क्या prediction क्या है? You predict, right, Arsenal games? I will predict. I think it'll be a 2-0 or at best a 3-0. We'll win. We'll win Oh wow, comfortably. that'll be good, huh? That would, at Goodison Park, that'll be great against the I Sean don't Dyche side. think this game is the one. I don't think this one's going to stop us. I think we'll drop points sometimes in the season apart from City, but not in, Hmm. I hope it's not this game. Yeah. By previous game, I didn't give the prediction. Chelsea Fulham, I feel that it'll be like the odd goal. And yes, मैं थोड़ा सा romantic बंदा हूँ, तो मैं तो बोलता हूँ भाई मुड्रिक getting the one and at We'll get least it. shutting the mouth. I know कुछ ज़्यादा ही हो सकता है, it might come back and bite me, but that's my prediction, bro. Winner Mudrik. And on the Arsenal match, मैं बोलूँगा that क्योंकि Sean Dyche literally had no changes ना, I still feel कि मोरल चेंज करना इतना जल्दी डिफिकल्ट रहेगा, तो आई फील दैट आर्सेनल माइट गेट द विक्ट्री एंड इट माइट बी एक्चुअली अ 2-0, 1-0 and then a late on the break, so I'm saying 2-0 away victory, that will be there. Just while absolutely there, but come on, big game is Spurs against City, it's at the Tottenham Hotspur stadium. So I think यहाँ पर हम बात की about Everton being a bogey team, right, Daksh, for Arsenal, लेकिन Spurs at the Tottenham Hotspur stadium are even more. I know रिवर्स लेग जो 2-3 हफ्ते पहले हुआ था, लाइक फुलम चेल्सी, वहां पर भी आई थिंक स्पर्स गॉट अ लॉस, लेकिन दे स्कोर्ड 2 goals फर्स्ट एंड मैन सिटी केम बैक विद 4 goals, क्रेजी गेम एब्सोल्युटली। हाउ डू यू सी दिस गेम गोइंग, स्पेशली नाउ दैट कैंसेलो नहीं है यार मैन सिटी में, तो अभी विल इट पुट देयर डिफेंस लाइन इनटू पर्सपेक्टिव कि नहीं यार, मतलब वी हैव टू फोकस एवरी गेम? I learned a lesson which I had learned a long time back, 2 हफ्ते पहले, which is never trust Tottenham. You never trust Tottenham. If a Tottenham fan tells you it is raining outside, you check the weather yourself. Don't trust Tottenham or their fans or their players. That being said, Cancelo's gone from City. That's important. But Conte is also not going to be there on the touchline. He is getting his surgery, and quick recovery to him, yeah. It's not an easy surgery. What gallbladder remove ho raha hai bande ka. So he's not going to be there on the touchline for a while. Right. They have Pedro Porro. I want to see how they play. I want to see how they play because Tottenham is famously called Tottenham half Spurs. They only show up in the second half. And I'm assuming Conte has a huge role to play in adjusting and tweaking and bollocking the players and everything. Um, I just, I don't see them winning, man. I don't trust Tottenham. 3-0 आई थिंक City. कॉन्टे वाला फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है, इनफैक्ट Yeah. मतलब दैट रियली मैटर्स अ लॉट। इनफैक्ट जनरली इवन पेप ऑन अ पर्सनल फ्रंट ना हैज नॉट डन वेल अगेंस्ट स्पर्स, आई थिंक अगेंस्ट Hmm. लाइक बीट व्हाटएवर क्लब ही इज प्लेड विद ना, ही इज नॉट Yeah. डन सो वेल अगेंस्ट स्पर्स, सो दैट इज समथिंग देयर। लेकिन अगेन डांजुमा, आई बिलीव कप गेम में ही केम एंड स्कोर्ड एज वेल, डिड ही? आई थिंक Yeah. Yeah. ही Yeah. प्रीटी मच, या ही स्कोर्ड, राइट? तो Yeah. डांजुमा कमिंग इन हेल्प्स। आई नो रिचार्लिसन, भाई रिचार्लिसन, हाउ डू यू सी यार रिचार्लिसन, क्योंकि हम एवर्टन आर्सेनल की बात कर रहे थे, रिचार्लिसन काइंड ऑफ कनेक्ट्स दिस गेम एज वेल। आई नो ही इज नॉट
right now they're ready. But do you see Richarlison in the flop category, or do you see nahi yaar, Richarlison brings that infectious energy that probably Spurs was missing? It's a bit of both, but I don't know. I still feel कि यार Richarlison. I don't know why is Richarlison there. अगर डांजुमा जा रहा है तो डांजुमा is more leftish, लेकिन I can see वहां पर issues होंगे यार. How will Conte keep them all happy? I'm just thinking about that. I think it's Danjuma is more to do with the fact that if you have a player which falls out of form as Son has, आपकी team collapse ही ना कर जाए. How much can you expect from Harry Kane to score the goals, to drop down deep and make the passes? Richarlison since his move has not scored a single goal for Tottenham in the Premier League, right? 60 million का था वो बंदा. He's not called a flop. जैसे वो ब्राजील की जर्सी डाल देता, he's a completely different beast. But as soon as he puts on that white jersey, it's gone. So this is, I think, Danjuma is just like a goal scoring reinforcement. I think I don't think Conte is the kind of guy who gives a shit about keeping other players happy. He wants to win. And if a player like Danjuma can do it, he'll do it with Danjuma and tell Son, you tum baithe raho bhai. You will get your chance again. Right now, he had no option but to make Son play, right? Son के लिए competition भी जरूरी होता है. How will Danjuma do against City? He is an underrated player. He's a good player, but let's see यार क्या होता है. City, I don't see Tottenham doing anything, to be honest, Ankit bhai. No matter what it is, I don't see Tottenham. यार मैं लेकिन आई नो मतलब रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर नथिंग, स्पेशली जब सिटी चेस करी आर्सेनल को. लेकिन रिमेंबर नेक्स्ट हफ्ते से भाई चैंपियंस लीग टॉक्स विल आल्सो बिगिन, व्हिच हैज ऑलरेडी बिगन. आज बाय द वे एक वीडियो निकाला मैं उसके लिए, बिकॉज फॉर मी सिटी का वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट्स अ रियलिटी कि यार मतलब मेन थिंग विल बी पेप के लिए टू विन द चैंपियंस लीग. आई नो वो बोलने की बात है कि यार हम नहीं भी जीते तो कम ऑन, वो बोलता है मतलब 5 बार में 4 बार जीता हो, आई एग्री. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट फोकस विल गो. सो फॉर मी this is a huge match considering कि यार अब हो सकता है they might drop some points. And by the way City के I know FPL के बारे में बात करने में people, City have a tougher run than other teams. So कहीं ना कहीं मुझे लगता है that it is crucial for them to win. I know it's an away game, but मैं रिकॉर्ड देख रहा था भाई, last 3 away to Spurs, ठीक है, aggregate score has been Spurs 5 City 0. It's crazy. आई कांट even believe it यार. मैं वापस से रिफ्रेश करके चेक किया, स्टार्ट करेक्ट है भाई. लास्ट 3 games अवे टू स्पर्स, ठीक है, एट द टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम इट्स स्पर्स 5 मैन सिटी 0. ओह माय गॉड. तो इट इज एक्चुअली अ बोगी टीम, बट वही है, मे बी एक अच्छा मौका है फॉर देम टू चेंज दैट. और आई डोंट नो, एक थोड़ा सा ट्रिविया हो जाए, थोड़ा सा क्विक एक ट्रिविया है. ओनली ट्वाइस इन द प्रीमियर लीग हैव स्पर्स लॉस्ट 4 in a row without scoring away against an opponent. ठीक है, sorry, have City lost. तो City, hopefully for Spurs fans, if there are any, with all due respect and no respect, they might actually go on to lose a 4th game against Spurs, which was the last team, or who were the only teams which were able to do that against City, where City actually lost 4 games without scoring back to back. Yeah, 4 games. Anyone in the chat बोलिए. मतलब there's obviously a reason why I'm asking that. या तो मतलब एक तो आंसर मिल जाना चाहिए. Probably Spurs only, right? नहीं, not Spurs. It's not Spurs. Let's see if anyone can get that. By basically speaking, question है कि यार अभी Spurs are on a winning run of 3 games back to back in City at home. ठीक है, और only 2 teams actually have beaten City twice. So 4 times. Sorry, 4 times back to back. It has to be then United and Chelsea. Yeah, Chelsea is correct. And this was obviously, anyone knows when, but this was a crazy 2006 to 2009 Mourinho, end of Mourinho wala time. And then they probably went on to win. But and उस समय याद है मुझे, we got like a crazy 6-0 victory against City. Was it in 2006? Yeah, it was probably in 2006. But एक और was very surprising, but they in fact played the opposition which Chelsea is playing this weekend. So this was Fulham. Sunderland. Oh, Sunderland. What? Fulham Sunderland हुआ था ना midweek में. तो basically Sunderland was the last team, and it's crazy to know that. So मतलब Spurs can do, they can create history absolutely. Al Nassr in 2022. नहीं. It was basically Thomas Tuchel beat Pep. Yeah, it was basically. लेकिन this was
Mourinho, and after that Avram Grant. So basically Mourinho and Avram Grant on a side, that was what it was. And then Sunderland again, वही उस समय ही था Hmm. Sunderland. I'm pretty sure that was around 2010 when Sunderland was in the Premier League. But crazy that. But anyway, Spurs City, bhai, everyone. I've seen all the predictions in the chat. So Daksh, you're going for a Man City victory, right? क्या score by prediction 100%. क्या है? Yeah. Never bet on Spurs. Never bet on Spurs. हाँ, मतलब I genuinely feel that, in a very strange way, that Cancelo going will be like a statement thing. I know, मतलब वो उसने बोला है कि यार नहीं नहीं कोई problems नहीं थे, I was not getting game time and all that, but we know that Pep is Pep, bro. वो Yeah. है, तो कहीं ना कहीं it might actually help the, as in just the place, simply put. लेकिन again, there are a few other games as well, और भाई जो भी लोग यहाँ पर है who are waiting for Chelsea game, we have discussed first half an hour में Chelsea का game, then next half an hour we discuss Everton Arsenal, and the last 10-15 minutes we have been discussing Spurs City, and we'll come to other games as well as FPL towards the end, absolutely. But बीच में एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का थोड़ा टच करते हैं, एंड आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड पैलेस का गेम है, but the big news यार, मतलब I would like to hear your views about this. I know it's very very subjective, we can only be anticipating कि क्या है सच, but what do you think about the entire thing? Mendy और now Mason Greenwood, after इतना मतलब लंबा process करने के बाद, both have been acquitted. मतलब it's kind of very strange for me. मतलब इसका तो clear था यार. I understand that sometimes you go for money and people are like, just एक बीच में फंसा दिया जो रोनाल्डो के साथ हुआ है, but this is a clear case. Yes, it's. I thought so. It's very obvious and evident. There's photographic, videographic, and audio, but you see how it gets really weird. I'll tell you. The day she released these things, उसके father ने बोला, I'm sure she regrets releasing them, and he tried to deflect it as she was hacked. Not true, but yeah, whatever. It's strange. That was the first time I was like, ये क्या है? How is the father actually saying कि it's probably a mistake? You won't say that, right? And then eventually he was given a restraining order to stay away from her, but he violated his bail conditions and met her anyway, and now they're together and there's talks about engagement. It's Shocking, right? it But is that's it's weird यार, to be honest. अंकित भाई, मैंने बिल्कुल मोहक के स्ट्रीम पे भी यही बोला था. Now of course United fans want Mason Greenwood back. He's their star boy and they need it. I just think it's going to be a very difficult decision for Man United. They're very PR heavy, number one. Number two, they've just cleared their dressing room of any negative influences and distractions. And now this is it's come at the worst possible time. They're in a final. but the best part is Eric Ten Hag is around, तो मतलब वो Nahi, that's he'll make also a something that's नहीं. giving me thoda sa confidence issues. When he was working at Ajax, Mark Overmars ka bhi aaya tha. He's an Arsenal legend, but I absolutely hate him for the things he did to women. Whatever, creepy messages and all that stuff. But Ten Hag never really had an issue. He said, I'll work with Overmars and everything, which is so strange, yeah. And to be honest, Mason Greenwood isn't the only one. There's so many Partey. I don't celebrate Partey being out on bail. I never celebrate, oh, his bail extend ho gayi. Yes, horrible. Partey, fucking Danny Alves right now. See, वो double standard मुझे दिखता है Daksh. I don't know what. See, sometimes there's a very thin line, like Partey, and even like I know people don't talk about much Ronaldo, but yes, I know that that Yeah. wasn't a true story, but there were allegations, and you cannot deny allegations. Allegation is an allegation. Partey का भी same चीज था वो यहाँ पर, लेकिन वही है, when you have so much evidence and then the victim kind of coming out and kind of making statements, her family etc. is different. Yeah. लेकिन overall footballing perspective में भी आप देखो तो Manchester United, do they really need a Mason Greenwood आज के दिन में? If you really ask me, like They I know would Anthony want. has not worked, but would they need? Yeah, because they want a striker. It's better than going for an Osimhen for 90 million, right? If you can reintegrate a Mason Greenwood to the centre forward position, then why you use that 90 million somewhere else? Replace a Harry Maguire, get a new keeper. So for them, it's good for they can get a striker if they get Mason Greenwood back. They need it. For me, this case, the thing is, the police statement is saying we decided to drop charges and stop the investigation because of the lack of credible witnesses, which basically means Harriet stopped being cooperative with the police, and new things which come to light, which is as vague as they want it to be. So it's strange, man. I have no horse in this race. I can't
I'm not going to boycott football if Mason Greenwood starts playing. I'll be disappointed, but I can't change anything. And again, like हम लोग अपना viewpoint दे सकते हैं. We cannot be sure about what you are saying, to be very honest, because we don't Yeah, really know what is the actual truth. Or I know that जो एक बार हो गया है, मतलब why kind of put that entire club in that soup. yeah, But if you really मतलब this perspective जो comment है ना, I know this might be a minority of the comments that I'm seeing, yeah, but to some extent we cannot deny this comment as well. There is some truth to, like, maybe the other side of the story is true. yeah. Who knows? I I don't if know. I just think I believe in second chances as well. I have been given second chances, but I think getting a second chance from possible sexual assault has nothing to do with let him play football. If you want to give Hmm. him a second chance in life, the fact that he's not in jail is a second chance. The fact he has the ability to be around people is a second chance. How is I don't see the connect between let him play football, he will never sexually assault somebody. It doesn't compute for me. This No, is but like the यहाँ मेजर पॉइंट यहाँ पर है ना. देखिए हम लोग, आई नो दैट वी आर काइंड ऑफ Hmm. स्पीकिंग ऑन दैट फैक्ट Yeah, दैट व्हाट हैज हैपेंड, बट द reality is the yeah, situation is that we are talking about Manchester United. Yes, I know that we shouldn't be kind of judging clubs or people differently, but we cannot deny, practically speaking, when you are representing Manchester United, yeah. you just cannot be involved, even if there is like a section of the True. fan base, and we are talking about what we are talking about, millions of fans for Manchester United, and Mm, if there's a section, that section also is millions. So if yeah, those millions of fans are against it, in my opinion, and if they really strongly believe that this guy doesn't deserve to basically get even, like, there are people मेरे खुद के चैट में आते हैं, लोग बोलते हैं जब मेंडी का हुआ था ना, स्पेशली दैट यार भाई, मैं लास्ट ईयर मैं, like we do, right, mid season review and year review, तो उसमें he had last season he had a decent season, तो मैंने डाला था उसको. I think people who had decent season, like best 11 or worst 11, one of those two I had put, I don't know. So I remember chat, matlab, they went wild, bro. As in, why are you even taking him? Don't even take his name. This guy doesn't deserve it. So that is the kind of response you get. So yeah, sometimes an entire fan base can be, totally, yeah. and it's not the right thing that you do. But at the end of True. the day, there should be some middle ground for such things. I Yeah. don't know. Matlab, बहुत ही gray area है for me. Yeah, see, sexual assault is honestly England mein it's a conviction rate of 3%. So Hmm. I saw a comment, I think it was V se naam just Viola. Um yeah, it's happening in England because there's a 3% conviction rate, and it's 3% because you have to prove three things in sexual assault in England. One, that a person willingly did it. Two, the victim did not consent to it. And three, the perpetrator deliberately overruled the consent या फिर did not consider consent. Third thing, proof करना कैसे करोगे? Because consent is gray, you can withdraw consent, all of those things, whatever it is. It's just the thing that the victim became uncooperative, which is what the police is saying, and there were new things which came to light. But I just think, जैसे किसी ने यहाँ पे कहा, it sets examples that other what nothing. For more than that, yeah, for Manchester United, it's a dicey situation because one, Manchester United has a very good women's football team. They see all these things. Number two, there are actually a lot of women who are actually fans of football clubs, right? So I'm pretty sure some of these women will, of course, will not be too thrilled by this as many men might be. The reason I Yeah. say this is, देखो, sorry. The reason I say this is this. I told this in Mohawk ki chat also, and if you guys want, you can do this experiment. I say this from a person who has known multiple women who've been victims of all of this. If you have five women in your life, you ask them if any guy has ever harassed you, made you feel uncomfortable, or let you have done something creepy to you, and I guarantee you, out of those five, four of them will say yes. Then you multiply the number of women by 10 and you take, let's say 5 women है तो 50 आप आदमियों से पूछो कि आप कितनी बार आपको falsely accuse किया गया है और somebody has called you wrongfully a creep or whatever. होंगे उसमें, definitely होंगे, but that will be maybe 20 or 25 out of 50. So all I'm saying is more women go through this, and when you see judgments like this, they don't even feel like coming out and reporting this. But it's too gray. We don't know. I'm in Ireland. Ankit Bhai is in England. The case happened in a room in England. Um, हमें नहीं पता. My point of view is there was just too much irrefutable evidence that, and I'm so surprised that he's out. But it is what it is, man. It's on Ten Hag and United now. Right.
कोई नहीं, चलो भाई, लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस. आई नो आई वाज लाइक काइंड ऑफ सरप्राइज और टेकन अबैक विद दैट रूलिंग इटसेल्फ. मतलब ऑनेस्टली मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ तो ये है कि यार, बिकॉज at the end of the day, as in there are so many people looking up to that particular club or that particular gameplay. I know थोड़ा unrelated चीजें होती है, दो चीज, it's like chalk and cheese. But for me, I cannot see him coming back and playing, and that's my honest opinion. अब वो होता है that again, like Daksh said, मतलब I don't think यहाँ पर I'll be able to do anything. Like honestly speaking, with all due respect, I have to kind of just accept it. But yes, I will not be excited about it one bit. Again, no judgments, but definitely there is doubt. Yeah. I don't want Greenwood any exactly. Her just is a United fan, and that's what even he agrees with that because of एक person भी doubt होता है ना, because you are Hmm. Manchester United. मतलब even for my club, anyone, I wouldn't want anyone like that to be honest Same. involved. In fact, मैं talking about women, right? The women's team. So I know a content creator, Chelsea, a content creator for women's team, and she has put out a tweet today, and very strong tweet in the same direction that basically speaking tomorrow, like what is that line where you feel that okay, fine, people are safe or it's not, it's untrue or true, because it has become a gray area, and that's the bit. So they are supposed to take it tough, whether the player likes it or not. Yes, compensation or जो भी हो, but I don't think he'll come back. It's the more honest opinion. Yeah. But anyway, नहीं मैं अभी इंडिया में हूँ यार. I have been Yeah, I traveling in the last misspoke. few I years. said, हाँ, I am in Ireland, Ankit bhai is in India, and then case is happening in England. तो इतनी spread geography है, हमें क्या पता यार, हम तो बस जो दिखता है उसी पे ही बोलते हैं. Right. कोई नहीं है, doesn't matter anyway. A person, yeah, वो भी है, two sides of the coin always. But Yeah, anyway, yeah. moving on to their match, and yes, यहाँ पर गौरव तो बोल रहे Arsenal winning league, Newcastle in top 4, Chelsea mid table. Are we living in parallel universe of relativity? यार भाई, और देखिए एक ही भाई विंडो में 300 million after spending 300 million, still we are 10th. I know that is the banter that others are having, but that's the thing. We love football because at the end of the day, you cannot predict things, and that's the best part of it. Abhi we are, remember, Arsenal are to play City twice, so that is going to be very very interesting True. week. But that's why this weekend बहुत important है for City as well as for Arsenal to get a full point For either us, it's ways. we have to keep that cap, जितना बिल्कुल ज़्यादा हो बिल्कुल सके. 100%. So talking about Palace visiting Old Trafford, I think if I'm not wrong, भाई after the League Cup success, I know success नहीं हुआ अभी तक, लेकिन finals reach कर गया. I think that is also in a way success only for Eric Ten Hag. Hmm. इतने जल्दी यार, मतलब that's crazy. I think Varane has retired. आज आया है that he's retired from international football, and that will Hmm. help Manchester United to definitely large extent. Zaha doubtful है. Yes, FPL gurus याद रखिए, Zaha is doubtful. Palace यार, मतलब again Patrick Vieira being there from an Arsenal fan, मतलब I was seeing यार this guy will become the next Eddie Howe or Potter, the way Hmm. I saw it. Where has he lost? कहीं ना कहीं I think I'm not impressed with Palace this Yeah, term. this season it's gone very wrong for them. I don't know what it is. Maybe it's just the ceiling of players. There's also another thing, Ankit, by which I've noticed that it's very few successful players that become great managers. I mean, Lampard and Gerrard, you always obviously know. Hmm. Henry, because the thing is, and I saw this from one player who was talking about Henry's stint as AS Monaco manager. He said that in training, Thierry used to take the ball, do something, show us how to do it, and then asked us to replicate it. But we are not as good as Thierry Henry, and he doesn't understand that there is a difference between what he used to do and what we do. And so there is an expectation from elite players that players ये elite चीजें क्यों नहीं कर सकते, which is what Hmm. I think maybe Patrick is also suffering from. He's trying to get these guys to play in a certain way, which is not maybe that these Palace players can replicate. So it has to be that the manager has to also either he goes to a club that has the players or can give them the players to replicate Right. what he wants to express, or the manager adjusts. So maybe it's just a thing about ceiling, but Palace have great players यार. Olise, Eze, Zaha चलो doubtful है. हम लोग बहुत strongly link हुए थे ओली से, बहुत strongly. मतलब Yeah, we were almost about to get him, and last yeah. season I think it was a cup semi-final. Mm-hmm. Olise's performance was Mm. terrific. But वो ये finishing ability, like I think they still depend on Zaha a lot. I think Yeah, कहीं ना कहीं Patrick Vieira को एक थी यार, last में Chelsea मान जाएगी to get to sell Gallagher. He really wanted Gallagher because yeah, Gallagher was a player of the season last season. I know yeah, yeah. creativity नहीं है, लेकिन वो infectious energy जो लाता है ना, I think Mm. that kind of balances Yeah. Olise and Zaha being on the wings. So I think that is something that they're probably missing. But anyway, coming back to United, But they got भाई Sambi, Arsenal से.
They got Sambi. Oh yes, of course. So Lokonga let's is see there. how By the way, that he happens. might actually start, huh? Yeah. Possibly. I feel. But what about Weghorst? Yeah, matlab, I know Martial is back from injury, but Weghorst, matlab, I always have the thought that Weghorst, yes, Hmm. Wolfsburg days में काफी अच्छा था. Burnley and even recently for Dutch team as well as Manchester United भी मुझे लगता है that he's more of a super sub. Probably Hmm. you're expecting Martial to start this game. Martial, he'll start. Considering जो Carabao Cup में depends. To be honest, पता नहीं with what Ten Hag does. Maybe he wants to also preserve Martial because अभी Mhm. अभी injury से आया है. You don't want to risk him too much. Weghorst, Weghorst also been decent, but I think that Rashford and Martial connect no is very very different, yeah. From Weghorst and Rashford, so I think Martial should play. I won't be surprised if he Okay, does. fair enough. And by Sabitzer versus Fred. I know Sabitzer abhi just आए हैं. Probably will Hmm. take time, but until April, like Sabitzer is a different kind of a player. The way I see Sabitzer is he's more like ज़्यादा holding वाले region में डालूंगा more than a player who kind of goes forward. Yeah. Fred is. I think he's not a DM. People are always think that Fred is a DM. वही problem थी with Casemiro. Hmm. Casemiro gives that space to him, right? Sabitzer is Ericsson without as good as passing but better defensive Exactly. ability. Simple as that. Hmm. He will be there. He's a proper center mid. That's what I'll say. Nothing too fancy about him. He'll get win the ball. He'll move it along. He'll create space. Whatever. He'll be a nuisance. But I don't think again it's too early. I don't think many January transfers who were signed on deadline day will start, including Jorginho for Arsenal. I think it will take time for these guys to bed into the system. I think this game comes in a little too early. Maybe next game week, who knows? Um, who will United play? I think Fred will be there, yeah. Won't be surprised. It's Casemiro, Fred, and Hmm. Bruno, and then Sancho. Sancho made a comeback, which is good to see. इनफैक्ट या प्रीटी इम्प्रेसिव है. मैं बोल रहा हूँ यार Yeah, सैंचो माइट बी. और ही सेड इट यार. आई थिंक एरिक टेन हाग ने बोला दैट सैंचो कैन प्ले एज अ कैम एज वेल. तो yeah, आई डोंट नो इफ ही इज कंसीडरिंग, yeah. क्योंकि अभी ब्रूनो फर्नांडिस काइंड ऑफ हैज शोन कि थोड़ा बहुत डिफेंसिव वर्क कर सकता है. ही Yeah, कैन कम एंड yeah, स्कोर द ऑफसाइड mm, गोल. पीपल डोंट नो इट. आई नो मैन yeah. यूनाइटेड फैंस, कम ऑन, हम But बैंटर था. क्या 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 lineup था towards the end of the game? Lindelof was playing center defensive mid. Yep. Fucking it's insane. Sancho was scam. It's insane, bhai. What Ten Hag is tweaking was amazing. It's going to be interesting, absolutely. But Olise getting a big move next summer. I think then he has to still prove himself in terms of the finishing ability or consistency. I think skills. So now I think Yeah. Manchester United fans will know more than anyone. Yeah, come on. Anthony is an example. Anthony up until मैं तो अभी भी बोलता हूँ. Hmm. Anthony as much as banter का number one target है आजकल. लेकिन the reality is that Manchester United as a team are doing well. So that's a good platform for him to Yeah. kind of settle in. और वो करेगा eventually. I used to see him do stuff in Eredivisie. Lekin having said that, Olise has to do that more consistently, even at Crystal Palace level first, and then probably move, in my Hmm. opinion. But anyway, but क्या बोल रहे हो सब लोग यार. यार कुडूस यार, he might actually be the next move. Who knows? But having said Very that, surprising he's not moved, to be honest. yeah, I think Kudus नहीं करेगा. I think eventually करेगा. I think the fact is because Hmm. it's mid season ना, तो a lot of clubs are not giving Mm-hmm. their main players. वही reason हो सकता है. But having said that, Hmm. भाई Man United Palace, people in the chat, do give me a prediction. भाई मैं बोल रहा हूँ Manchester United भाई back to back victories हो कितने. They have won 5 home Premier League matches, so it's going to be 6th continuous. I can't see them losing or even drawing to Palace at home, despite midweek में जो हुआ था matches. Hmm. I'm going for a United 3-0 victory. What about you, Ooh. Daksh? I said 2-0. I think a Rashford goal and a Martial goal should make it. I think last time the Palace थी भी, they just won at the depth by a wonderful, wonderful free kick. And I think Hmm. United were well on their way to win that game anyway. So 2-0 should be fine at Old Trafford. Old Trafford पे है ना game ये वाला? हाँ, ओल्ड ट्रैफर्ड में. वो हाँ, तो ओलिसे लिया था ना फ्री किक, if I remember yeah, right. yeah, हाँ. yeah, yeah, Brilliant, brilliant. 2-0, yeah. 3-0, 3-1. चलो Mm. भाई. I think इस time Man United will not give it away. I have a Yeah, feeling. वही है, मतलब this time इस weekend में ऐसे मैचेस हैं ना जो recently बहुत खेले एक दूसरे के साथ. तो इसलिए it yeah. will be interesting. But थोड़ा बहुत before going to the FPL and other talks यार, मतलब I know people have been waiting for FPL, but don't worry, आज deadline नहीं है. तो थोड़ी Hmm. लंबी stream होगी, but towards the end हम करते हैं FPL. You all know that. भाई Wolves versus Liverpool है. तो Liverpool, एक चीज जरूर बोलूंगा. I know Liverpool have been probably in the worst, I would say, in recent times.
But Mo Salah यार मतलब he is nearing big record. Liverpool's all-time Premier League goal scorer कौन है भाई? Robbie Fowler. He's just 3 goals away. 3 goals away from him. That's Hmm. huge. But Liverpool यार मतलब what do you think is going wrong? I know midfielder is मतलब सब लोग बोल रहे midfielder है, or is it like Klopp being too rigid? Uh, there is something wrong. मुझे लग रहा है मतलब हमने ड्रॉ किया वो अच्छा नहीं किया. We should have won that game. That's for sure. But what do you think is wrong यार? मतलब Liverpool, there's something wrong for sure, big time. Ankit bhai, do you remember Johnny Bravo? Of course. Right? Liverpool are Johnny Bravo. Everything up top, nothing in the back. वही है लिवरपूल का इशू यार. They have depth in attack. They have what? Firmino को नया contract मिल रहा है. He'll be what? 5th choice striker now, and he's still staying. Insane. Yep. But भाई, for me it's just so strange that लिवरपूल के इतना बुरा लक चल रहा है. Midfield में कुछ नहीं है. It's like a polo, nothing in the middle. Defenders getting injured, जैसे गौरव कह रहे, Konate is out for 3 weeks. So yeah, man, I mean, they're using 75-year-old James Milner in right back, center defense, left wing, whatever. Bhai, Oxlade-Chamberlain is playing well. They're relying on, मतलब समझ नहीं आ रहा है what is wrong with Liverpool. And Either they Chamberlain have is out of contract yeah summer में. Imagine. who? Oxlade Chamberlain. He's out of Yeah. contract in the summer, and that guy is supposedly all of a sudden, your main man in midfield. Naby Keita, who everyone hates, is their most consistent player now. The only player who can stay fit and perform थोड़ा सा. तो यार लिवरपूल का तो भाई, it's getting bad to worse for them. I think the issue that Liverpool has been, it's been for a long time. One, एक तो mental and physical fatigue होता ही है. Two, जो squad refresh होते हैं ना, they don't have the money of Chelsea to do it in one window. So it should have started much before. जैसे सिटी कर देती है ना. नाउ कैल्विन फिलिप्स ट्राई किया, डिसाइड किया नहीं, इज नॉट वर्किंग, दे विल गो फॉर अ न्यू सेंटर मिड. राइट? सिटी कीप्स चेंजिंग दीज 1 or 2 3 प्लेयर्स ओवर एंड ओवर. आपने ही कहा था कि सिटी कीप्स चेंजिंग द सेंटर बैक पेयरिंग्स आल्सो. Yep. I think City is constant in this refresh so that they don't get stale. I think Liverpool की problem ये है, they've just gotten too stagnant. And the only thing was that forwards available थे इस window में, so they got themselves another forward. Now, will that mean that they have to cash in on one of their forwards? I don't know. बात हो रही है कि सलाह पे अब कैशिंग करने का टाइम हो गया, which is absolutely insane to me. हाँ आज वापस से पीएसजी के लिंक्स आए बाय द वे. Yeah. द फैक्ट इज जीएच का जो हुआ ना कांड उसके बाद इज लाइक साला माइट बी द नेक्स्ट टारगेट. बट या प्रेम रेड्डी यार थैंक्स फॉर द सुपर चैट ब्रो. द जेस्चर ऑलवेज काउंट्स. मच लव टू यू. शाउट आउट आपको. एब्सोल्युटली व्हाट्स द मोस्ट रियलिस्टिक पार्ट टू यूरोप फॉर सीएफसी टॉप 4 और चैंपियंस लीग? Does Enzo alone solve the midfield issues? Which other club has made an underrated signing? तो भाई सेकंड पार्ट तो मैं दक्ष के पास जाऊंगा. फर्स्ट पार्ट मैं क्विकली लेता हूँ. भाई रियलिस्टिक पार्ट फॉर यूरोप इज राइट नाउ. सच में बोलो रियलिस्टिक पूछा आपने तो रियलिस्टिक फॉर मी इज द वे दैट हम करते हैं जो हमने किया था सारी के अंडर, where we kind of in fact where we won the Europa League the previous season, where we finished and we got to the Europa League and then win the Europa League, and that is likely. Plus next season हम करेंगे बवाल in the Premier League is what the real picture is right now, if I'm being really honest. So top 6, go to Europa League, do well there, at the same time do well in Premier League. That is the realistic picture. Obviously there's always a chance यार Champions League का, मैं मना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम नहीं expect करेंगे, and that's the best part. I know the 2 times we won, it was like that. I don't think even Chelsea fans expected us to win, and that's the reality of it. Midfield issues he does not solve. Yes, आप बोलोगे यार 120 million euros देने के बाद भी does not solve, but that is the reality of today. अगर हम वेट करते समर के लिए, then who knows, he would have gone to Real Madrid or maybe PSG as well. Who knows, quite possibility. तो हम गए हैं, but we need like a Declan Rice / Caicedo वापस से. इसलिए मैं बोल रहा था दक्ष के साथ हमने बात की थी. Yes, for people who missed out in the beginning of the stream, we did discuss. We believe that Declan Rice और Caicedo के लिए एक bidding war होगी समर में. I think that whoever bids more probably will get it. वो वाला scene. Or the club which is in Champions League, which looks obviously Arsenal right now. The last part, by which other club made an underrated signing? क्या लगता है Daksh? Now that I actually think about it, I think Jorginho for 12 million is very underrated, man. We haven't broken the bank for. Yeah, we get a leader, we get somebody who's comfortable in possession, good at set pieces and dead ball situations. 12 million, 1.5 year contract, so we're not even financially committed to him for 4 or 5 years.
If he wanted to end, it can end in a year and a half, and he can go to Italy. If we like him, we can extend it by a year, and he can leave when he's 33, 34. I think for 12 million, getting a proven Premier League player who's comfortable, who knows the system, knows the oppositions, who knows about winning, I think that's an He underrated signing. hates losing. More He- importantly, he Yeah. hates losing. आप कोई भी इंटरव्यू सुनो, पता लगता है भाई आपके, you can see his expression, and because you know why, Daksh, he has come Yeah. through a very difficult phase of his life, and then he went and did what he did. So Mm. people always, मतलब जो behind the stories होते हैं, Jorginho के you get extremes. You get people who banter him like crazy, and sometimes I know that when it comes to pace and strength, he's not that guy. Absolutely. Mm. लेकिन Yeah. there are like absolute बोलते हैं ना, people who adore him like crazy, मतलब एक proper Mm. stan house है जॉर्जिनियो का, अलग से बना सकते हैं आप. तो he is that मतलब एकदम जो Yeah. पार्ट वाला चीज करता है वो. लेकिन जैक इज अ वुल्फ फैन, बाय द वे, बिग अप टू जैक, ऑलमाइटी फैन मेंबर. Big up वी Jack. डोमिनेटेड बोथ. यस, ये आपने अच्छा याद दिलाया, बिकॉज वुल्व्स वर्सेस लिवरपूल की बात हो रही है भाई, प्रीटी श्योर है प्रीमियर लीग गेम है. यहाँ पर कैमरा एंगल तो नहीं बोल सकेंगे. कैमरा एंगल नहीं बोल सकेंगे. दैट इज समथिंग दैट होपफुली फॉर ऑपोजिशन फैंस भाई यू विल सी Mm. दैट. बट कमिंग टू अगेन क्लॉप, हम क्लॉप के बारे में बात करते थे दक्ष. Mm. I know the guy is always having an opinion, and I love this guy. बहुत Mm. infectious energy है. He's probably in that legend category of managers right now in the world of all times. Yeah. लेकिन भाई he is a sore loser यार. We all know that. भाई आप Yeah. इतना इतना आप, and I know Liverpool fans, I can see Indian Scouser, Jishan, other people in the chat. भाई सब लोग, आप लोग भी बोलिए. इतने सारे जो बोले हैं ना, I know Todd Boehly has done his thing. I know that. भाई आपको हर एक इंटरव्यू में he has mentioned that, bro. You He does spent this. Yeah. 80 million, was it? I know, not 100 million, like 75, 80 million with add-ons included on Darwin Nunes, bro. I was one, I know, मैं पूरा चेल्सी का claim नहीं लूंगा. I was one की saying, नहीं, this guy will come good in the end. Uh, Yeah. and you have bought previously, I know you don't go mad, but you have bought previously Allison, you have bought Virgil van Dijk. How can you forget? As in, just because we are doing it all in one window, and we have not done in 2 3 windows put together, as in that doesn't make us just spoil football. I don't know, matlab, for me it's a clear case of being salty, yaar. Matlab, as much as he's a legendary manager as well. Pata nahi, where are you on that? I love Klopp as a person, as a manager, but as Yeah. a loser, yeah, he's very weird. Well, number one, he always flirts with Martinelli, no matter what the question is. By the way, Gabriel Martinelli is a great player, and I always like Klopp. Dur hai. Don't flirt with my player. Yeah, man. I mean, you've seen all the interviews. Sometimes about the tall grass, sometimes about the wind, sometimes about you know. There was this game, his whatever milestone game जो अभी recently हुआ था, and he lost in that game, and the reporter was something, and he said उसने बोला कि एटलीस्ट आरसी वेंगर से तो better किया है. एटलीस्ट आर्सन वेंगर की तरह तो नहीं 6-0 हारा. मैंने Yeah, बोला he मुझे puts it क्यों on the तोड़ा other one. भाई. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल, I hear you. So बिल्कुल, he मतलब is वो like that that. was also मतलब taken controversially, I know, but see, as in वही इंडियंस का तो बोल रहे that's how Klopp is. यार आप देखो, मतलब to some extent you agree, but double standards नहीं करो ना. आप अपना भी देखो, आपने भी किया. ऐसा नहीं कि लिवरपूल कभी स्पेंड करती ही नहीं है यार. मतलब they have spent very well. That's the difference. We have spent horribly. So I think credit to Yeah. Liverpool, but you don't say that you've not spent, bro. That I don't agree with this. Anyway, Piyush बोल रहे, the first thing which Arteta will ask Georgie to do is when he enters the dressing room is to show players how a Champions League medal looks like. Actually, नहीं हो भी सकता है reality, but that's a good way. I know that's banter, but I Yeah. think in a strange way, that Yeah. mentality, like we say, like Haaland coming to City, the guy might not have won a lot of things. They can, on a personal front, he has achieved lots already at this young age. So I think kahin na kahin in big games and big tournaments, it might help. But abhi Europa League, what is your thing? Yaar, Europa League, Villa to it's a bonus. That's how you're looking at it. Or you're like, nahi, now that you've got Trossard, Jorginho, has your expectation increased? Yeah, but I don't want to get too greedy, yaar, Ankit bhai. It depends. It depends on where we are when we play City. If you're playing, if we let's say if by the time we end up playing City for the second time and we're still 8-10 points clear, then you put your eggs in the Premier League basket. Then you don't tempt fate. Oh, sorry. If you are 8-10 points clear, then you can compete with two. Ki chalo theek hai. We are in a comfortable position. But if you're only like 1 or 2 points ahead of City, then you don't. Then you don't mess with Europa. You get the Premier League title. I value the Premier League title a little more than the Europa League because yes, it's a European trophy, but that's pretty much it. I think winning the Premier League one is financially more better for us. Second of all, yeah,
The Premier League, it's been too long. It's been 20 years, Ankit bhai. We need to win that trophy. So focus on Yep. the PL. If all's going well in the PL, let's say City drop a couple of points here and there. Let's say Spurs do something and we go 11 points clear of City. Then ठीक है, you focus on the Europa League at least for another round, and then you see what happens. But the Yep. Yep. further we go into Europa, no, if we reach the semis, then Arteta will not let go of that trophy. Then तो हम full strength, full all. Because teams भी अच्छी हैं, Juve है, Barca और Europa League United is में से more होगा. competitive than Champions League in terms of competition. Hilariously yes, insane. हम बात ही So, करेंगे नेक्स्ट हफ्ते, लेकिन इट बी इंटरेस्टिंग एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट yeah. ऐसे टीम्स है ना जहां पर पैसों की बवांदे यार, विद ऑल Hmm. ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द क्लब्स, बारसा यूए पर्टिकुलरली, तो दैट यू हैव टू से। बट अगेन भाई, वुल्व्स लिवरपूल हम बात कर रहे थे, आई नो थोड़ा सा डिबेट हो गया भाई। वुल्व्स लिवरपूल, एवरीवन इन द चैट, आई डिड सी अ कपल ऑफ प्रेडिक्शंस, एनीवन हु इज नॉट कमेंटेड डू कमेंट। लेकिन हाँ, मैं बोलना भूल गया यार, आज डेढ़ डेढ़ घंटे हो गए, मैं अनाउंसमेंट करना भूल गया दैट यस, प्रेडिक्शन लीग के लिए है ऑन। So Hmm. Daksh, I do a prediction league with all the members Mhm. basically. Mhm. So basically, there's a contest and the winner of that gets a prize at the end of the season. So Hmm. that is something. So अभी leaderboard मैंने update करना है, Yeah. and all the members or would be members are invited to that. मैं Mhm. करने वाला हूँ एक message on the community page of the members. Right. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टुमारो, ठीक है? कल रात Mhm. को है पहला मैच, तो आई इंक्लूड दैट एज वेल, ठीक है? तो उस पर भी इस बार करेंगे। लेकिन हाँ, वुल्व्स लिवरपूल की हो गई, आई थिंक बाकी मैचेस आई डोंट नो, न्यूकासल वेस्ट हैम, न्यूकासल यार पहले तो आफ्टर 24 इयर्स और समथिंग फाइनल्स में गए हैं। Yeah. They also want it as दे badly आर as डूइंग, United. मतलब अभी ऐसा भी नहीं कि देव स्पेंट क्रेजी मनी। गॉर्डन, आई नो दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, बट इट्स नॉट लाइक देव स्पेंट क्रेजी मनी ऑन Hmm. लाइक मुड्रिक और समथिंग लाइक दैट, जस्ट Yeah. सेइंग, यू नो। Yeah. So they've done so well, and I know West Ham are doing as bad as good as what Newcastle is doing. Yeah. Lekin Nick Pope, I'm reading here, Nick Pope can become the first English goalkeeper in EPL to keep 7 straight clean sheets. So I think ये मेरा क्वेश्चन आया था लास्ट वीक में, दक्ष, आई विल आस्क यू एज वेल, व्हिच इज द बेस्ट डिफेंस इन यूरोप राइट नाउ इन ऑन फॉर्म? मतलब मैंने न्यूकासल बोला था, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स हाउ गुड दे आर डूइंग It's एज अ टीम। Barcelona, isn't it? हाँ, टेक्निकली बार्सिलोना आल्सो भी है, लेकिन जो लग भी रही है ना कि यार एटलीस्ट बारसा का दे कंसीड अ लॉट ऑफ चांसेस, न्यूकासल आर लुकिंग लाइक No, दिस no. सॉलिड Barca वन। have only conceded 7 in the league this season, you know? हाँ, हाँ, they've सिर्फ conceded 7 very less, goals. Also exactly. insane. That's crazy, absolutely. Yeah. Barca, yeah, Barca is right up there, absolutely. लेकिन in terms of chances गवाना भी मैं बोल रहा हूँ, I think Newcastle is also very close if I'm not Yeah, wrong. yeah. लेकिन Kieran Trippier, I think FPL gurus आप जानते हो यार, Kieran Trippier will probably is on course to break the all-time record जो Yeah. Robertson का है in FPL. So that is a Hmm. surety. Shar has been brilliant. Nick Pope, like I said, is brilliant. And Trippier has signed a new deal, by the way. तो Newcastle, West Ham, भाई सब लोग चैट में do give me your predictions. Yeah. Quick predictions. Daksh, Newcastle, West Ham. हो सकता है they might have partied midweek यार, 24 साल बाद में फाइनल में आए, कुछ लग No, रहा no. है? नहीं, Eddie Howe won't let them do that. I think it's gonna be, relegation dog fight है वेस्ट हैम, they'll go for it. I think 3-0 or 2-0 अरे Newcastle. मैं तो होप कर रहा हूँ न्यूकासल ड्रॉप करे यार, फोर्थ अगर Yeah, थोड़ा सा me चांस too. है न्यूकासल से ही है मेरा तो। Me too. Me too. But that will mean United fans will be happy. So I'm in a dilemma right now. But no, Newcastle will get this one through. Ankit bhai, I have to leave because I have to go for another stream abhi. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, Yeah. एब्सोल्युटली। चलो भाई, एवरीवन इन द हाउस मैंने टैग किया, ए फॉर आर्सेनल, यू नो दैट, भाई दक्ष इन द हाउस। दक्ष, ग्रेट टू हैव यू, ऑल द बेस्ट Yeah, यार, of course. इंपॉर्टेंट वीकेंड, हम बात करेंगे, Yeah. लॉट्स टू टॉक जनरली, बट Yeah. यस ऑफ कोर्स यार, मिलते हैं सून, थैंक्स अ लॉट। Chalo. See ya. चलो Bye. बाय। Okay, I'll take the chat as well and I'll continue the stream. भाई सब लोग in the house, do let me know Newcastle with West Ham. What are your predictions? मैं बोल रहा हूँ Newcastle with West Ham. I'm going with a Newcastle victory again. Yes, लेकिन narrow वाला रहेगा. I think it's a proper relegation वाला match खेलेगी भाई West Ham to save that, and they will just about get that extra goal जो किया था Newcastle Fulham के साथ भी. तो I think I'm calling again a clean sheet and Nick Pope to get that EPL record of all time. Yes, 7 straight clean sheets in EPL. Wow, that's brilliant. Again, not good for Chelsea because Newcastle has to drop points. Absolutely. भाई सब लोग, भाई करीबन यहाँ पर 100 लोग देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग को बोलना चाहूंगा, यस, हम 1.5 घंटों से बात कर रहे हैं. लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव स्पोकन. इफ यू आर अ चेल्सी फैन, वी हैव स्पोकन ऑल अबाउट चेल्सी इन द फर्स्ट 35 मिनट्स ऑफ द स्ट्रीम, और हम वापस से आएंगे. If you are an Arsenal fan, we have spoken about Arsenal in the next 20 minutes of the stream. If you are a City or a Spurs fan, we have spoken in the
next 15 minutes of the stream, and then we moved on to Liverpool. Abhi Newcastle ki baat kar rahe the, and that is what we have discussed till now. I'll be predicting the games along with you guys, and yes, prediction league is on, but I am also going to be covering FPL. So FPL gurus, don't forget, all FPL managers, be around. हम बहुत सारे tips and pointers लाते हैं till the end of the stream. And सब लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, I request everyone to hit that like button, and in case you're new to the channel, consider subscribing. It is just a press of a button. Plus, we also have memberships on. Do check it out. All the perks. By members, do put your emojis on. Whichever club you support, put your emojis on, just to kind of remind. It'll help. But do not forget to subscribe. It's always a fan channel for all to see for both. Yes, absolutely. We are doing that as well. Thanks, Darren, for saying that, and Tiger Beast as well. Newcastle, but a KG game. Indians का उसे बोल रहे हैं. Declan Rice to shine now. Todd Boehly something so that he says to the team, "Get me that man." Okay, yes, ये कहाँ reference है? I know. Tiger Beast. So basically क्या हुआ था, for people who might not have read it or heard it, तो फाइनल्स चल रहा था वर्ल्ड कप का, एंड एंजो फर्नांडिस वाज देयर, एंड एंजो फर्नांडिस वाज गेटिंग वॉच्ड बाय वन मिस्टर टॉड बर्ली. ये जरूर से बोलूंगा, दैट डज नॉट मीन इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट मैच, बट इट सीम्स उसने बोला चेल्सी बोर्ड को, भाई गेट मी दैट मैन. दैट्स व्हाट हैपेंड. सो दैट्स व्हाट टाइगर विच इज गिविंग द रेफरेंस अबाउट डेक्लन राइस. आई मस्ट से, लेकिन डेक्लन राइस का सीजन इतना अच्छा नहीं जा रहा है, especially of the World Cup, what मैं anticipate किया था. तो कहीं ना कहीं it will help us get his fees down. I don't. Let's see. Newcastle 3, West Ham 0, 1-0 to Newcastle. Wow. भाई कोई भी West Ham के साथ नहीं जा रहा. Remember, West Ham are in that state जहां पर उनको जीतना ही है. At least a minimum point they need. Minimum. And that's not even joking. मैं minimum बोल रहा हूँ. यहाँ पर देखें, Newcastle तो भाई थर्ड है अभी, लेकिन equal on points in Manchester United. यहाँ पर Newcastle versus हाँ देखिए, राइट डॉग फाइट है भाई वेस्ट हैम का. 18 पॉइंट्स है उनका. दिस इज लिटरली जस्ट कपल ऑफ पॉइंट्स अवे फ्रॉम रेलिगेशन. एक पॉइंट इनफैक्ट. दैट इज क्रेजीली बैड यार वेस्ट हैम के लिए. और बाय द वे वेस्ट हैम भी जूझ रही है यार, बहुत सारे इंजरीज भी है. दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर श्योर. बट एनीवे, पोप इज अ बीस्ट. एब्सोल्युटली प्रेफर डेक्लन राइस मोर देन काइसेडो एंड अम्राबात. ओके, हाँ, इट डिपेंड्स ऑल्सो कौन से क्लब के बारे में बात करें. लोकेंद्र, आप बोल सकते हो कौन से क्लब के सपोर्टर भाई, आप बोल दो. मे बी आई माइट कॉमेंट ऑन दैट, बट लेट्स सी. Do you see the next English number one as Ramsdale or Nick Pope? I think as much as आज पता नहीं आप लोगों ने वीडियो देखा Ramsdale, I know Daksh was in the house, big up to Ramsdale and Arsenal जो अच्छा कर रही है, लेकिन एक वीडियो था जहाँ Ramsdale भांगड़ा कर रहे. किसी ने देखा है वो वीडियो? Ramsdale भांगड़ा कर रहे. But I think Nick Pope is the man in form. I would say Nick Pope is a better shot stopper, but the way that England probably forward playing football जो सोच रहे हैं ना, I think that in a way Ramsdale भी नहीं देखता. I would say that they need a voice on the pitch, or I'm still seeing Pickford will be there in my opinion in this causa, but उन दोनों के बीच में I would say Nick Pope personally speaking. लेकिन इंग्लैंड के लिए they still need a voice on the pitch in goal in my opinion. Can Everton survive from relegation? चिन्मय पूछ रहे भाई. चिन्मय, यहाँ पर it all depends on basically if Sean Dyche can do what he did with Burnley. अगर वो कर सकेंगे बर्नली के साथ, एवर्टन के साथ जो बर्नली के साथ किया है, in terms of the formation और doggedness थी, I think Everton have a brilliant chance. ऐसा नहीं कि यार एकदम ही बेसिकली श्योर शॉट रेलीगेटर है. आई थिंक दे नीड अ फ्यू पॉइंट्स, और उनकी जो टीम है ना इतनी बुरी नहीं. आई नो दे डिडंट साइन लिटरली एनीवन, इट्स टेरिबल यू वुड से, लेकिन याद रखिए डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन हु हैज बीन इंजर्ड, आई नो, हैज हार्डली प्लेड. Remember, तो कहीं ना कहीं मोपे डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन फॉर्म ऑफ फ्रंट टू. दे हैव अ ग्रे इफ ही वांट्स टू डू समथिंग. हमने बात ही किया बहुत. दे हैव बेसिकली एन एक्स बर्नली गाय आपके ऑन वन विंग, एंड देन दे कैन हैव एक आर्सेनल गाय इन वो भी. तो दे आर हैविंग पीपल. एंथनी गॉर्डन को रिप्लेस करना इजी नहीं होगा, बट आई स्टिल फील कि द फैक्ट इज टारकाउस्की इज देयर, मतलब पीपल दैट यू नो शॉन डाइच जानते हैं. इट माइट एक्चुअली हेल्प देम गेट सम फ्यू पॉइंट्स. और अगेन देखिए, एक विक्ट्री एंड एवर्टन आर राइट आउट ऑफ इट. आई वुड स्टिल से वुल्व्स, as much as Lopetegui है, I can see Wolves, you know, despite signing Sarabia and all that, I think might get sucked in, or it might be Bournemouth and Southampton. I think Everton will escape. ये मेरा है prediction अभी. I know mid season prediction है, but that is what it is. Ramsdale is a young player, yeah, but Pickford is better right now. हाँ चलो भाई, यहाँ पर एक बड़ा मैच है इस वीकेंड. आई नो थोड़ा सा मैं प्रीमियर लीग से शिफ्ट होने वाला हूँ, एंड आई होप पीपल डोंट ड्रॉप राइट नाउ बिकॉज इट इज अ ह्यूज गेम. I think one of the most underrated derbies in the history of football, or that is a Milan derby. Always, I love this derby. I love to watch this derby. It always gives some drama, bhai. Milan derby is not one to miss.
और यस आई नो रियल मैड्रिड के आज मैच है, आज यूवेंटस वर्सेस लाजियो भी है, मंडे को देयर इज आल्सो बार्सा वर्सेस सेविया, इन अदर लीग जो अच्छे मैचेस होने वाले हैं। बट पीपल, मंडे रात का अभी बुक कर दीजिए अपना टाइम, मंडे रात का 1:15 रात को इट इज गोइंग टू बी इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान। मिलान आर डूइंग पथेटिक, एसी मिलान दैट इज, इंटर मिलान अच्छा कर रही है, आई नो नैरो विक्ट्रीज भी हो रहे हैं इन द कप्स एटसेट्रा, बट दे आर स्टिल ऑन अ डिसेंट रन। आई बी वेरी सरप्राइज अगर एसी मिलान इस गेम को ड्रॉ भी कर पाए। यस एज अ एसी मिलान फैन एज वेल आई एम सेइंग इट, आई डोंट थिंक दैट मिलान मेंटली आर देयर, कुछ मेजर गड़बड़ हो रहा है, नॉट जस्ट द डिफेंस, आई थिंक कैप्टनसी आप बोल सकते हो, कलाब्रिया हैजंट वर्कड आफ्टर कमिंग बैक, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान क्विकली, जैसे मैं बोला भाई 12 लोग ड्रॉप हो गए, भाई जो ड्रॉप होते हैं ना, जैसे नाम लेता हूं भाई, क्यों होते हैं ड्रॉप यार, इट इज जस्ट एक फ्लोइंग स्ट्रीम है, वी टॉक अबाउट लिटरली एवरी गेम इन द प्रीमियर लीग एंड एवरी गेम इन द ला लीगा एंड सेरिया जितना हो सके, तो हम बात करते हैं पौने 2 घंटे तक ये, एंड देन हाफ एन आवर वी डू द एफपीएल टॉक्स। तो भाई ड्रॉप मत करिए, मिलान डार्बी इज ह्यूज एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। एनीवे, आपको इंटरेस्टेड है ओनली टू काइंड ऑफ फॉलो कपल ऑफ क्लब, दैट्स अप टू यू, इट्स योर विश एब्सोल्युटली। हम थोड़ा सा क्विकली प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, एनीवे डिटेल में वीडियो निकालने वाला हूँ होपफुली ऑन संडे मॉर्निंग, एज वेल एज वील ट्राई एंड गेट अ पैनल ऑन मिलान एज वेल एज इंटर मिलान, लेकिन हाँ मैं मिलान का भी बन सकता हूँ, बट एनीवे हैविंग सेड दैट, ये है भाई आप देख रहे हो दिस इज द सेरिया टेबल। तो क्या लग रहा है भाई, मिलान विल दे इवन फिनिश इन टॉप 4 कंसीडरिंग स्कूडेटो चैंपियंस, आई नो लास्ट टाइम विनर्स थे, लेकिन जो फॉर्म रहा है इट्स वेरी बैड, 2 draws 2 losses, और जो परफॉर्मेंस रही है इन द पिच इट्स टेरिबल डिफेंसिव, टेरिबल गोलकीपिंग, टाटा सानू नहीं है गोलकीपर यार, सच में बोलता हूं मैं तो, ऑलमोस्ट एज वेल एज टोमोरी। I think अगर मैं होता Pioli, I would have gone back to a back three. Yes, you might not have players, but just go to a back three, try and defend, and then build from that. वो करना पड़ेगा मिलान को। I think somewhere down the line they are trying to do a bit too much in midfield or in attack, and that is where they need to change. Honestly speaking, on the other hand, Inter Milan they are doing well. और बहुत दूर है, Napoli favorites है, but I'm still saying that if we get a draw, yes, Inter Milan versus AC Milan है, we will be happy, and that is मतलब so rare, so rare in a Milan derby, मैं ऐसे बोलूंगा, but that is a fact right now. भाई मैं बेसिकली बहुत फॉलो, आई वुड नॉट से आई एम अ फैन बट लाइक आई हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मिलान ऑलवेज, एक तो क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्लब फुटबॉल जो यू नो लीग फुटबॉल होती है ना, मैं एक्चुअली सेरिया पहले शुरू किया था बिफोर यू नो ईपीएल, बिकॉज दैट यूज्ड टू बी टेलीकास्ट फर्स्टली, सेकेंडली इंटरनेशनल फुटबॉल में I have followed a lot of Italians. One, because of the Chelsea connection in Italians. Second, because 94 World Cup मेरा पहला World Cup था, जहाँ you know Italy was kind of in the finals and was a big team as well. तो वो थोड़ा सा है, लेकिन in terms of actual players, I was a huge fan. Yes, Maldini, yes, but मैं बोलूँगा 3 जन मिलान में who really kind of you know, एक होता है ना गूजबम वाला इफेक्ट देते थे। एक था काका जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक था शेवचेंको, और एक था काफू आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम एज वेल, बट एनीवे it's basically over the years, but yeah, इतना नहीं बोलूंगा that I watched literally every match from like last 20 years जो मैं चेल्सी के करता हूँ, लेकिन I try and follow them as much as possible, definitely always, and I want them to do well. And of course, an ex Milan legend is the Chelsea legend in Thiago Silva, who can forget? Yep, very exactly. Do you think not getting Ziyech was a disaster class? Well, not getting Zaniolo as well. आई थिंक जानियोलो लिंक्ड हुए थे, एंड आई नो जानियोलो आज बहुत अच्छा यू नो बोले हैं इन टर्म्स ऑफ नहीं आई एम हियर टू फाइट फॉर रोमा, सब झूठ था एंड ऑल दैट, कम ऑन। पता है मोरिनियो उसको समझा के बोले भाई बोल दे भाई स्टेटमेंट, तेरे को यही रहना तो भाई अगर प्यार से रहना है तो बोल दे वो हुआ है जानियोलो ऑन लोन, क्योंकि क्या हुआ था ना, आई थिंक पैसे नहीं है मिलान के पास, तो क्या हुआ था जानियोलो चाह रहे थे कि वो जाए ऑन लोन टू मिलान, बट रोमा चाह रही थी पैसे अपफ्रंट, जो मिलान नहीं दे रही थी। On the other hand, Roma wanted to sell Zaniolo to Bournemouth. तो आई थिंक वहां एक मिस है, ये थी अभी का बात, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी। और वहां क्यों बोल रहा हूँ, ब्राहिम डियाज याद रखिए अभी भी टेक्निकली ही इज अ रियल मैड्रिड प्लेयर, या देयर आर स्टोरीज दैट ही इज गोइंग टू बी अ मिलान प्लेयर इन द लॉन्ग रन, लेकिन उसका थोड़ा फॉर्म हैज डिप्ड, ठीक है। देन रफाएल लियाओ के कॉन्ट्रैक्ट टॉक चल रहे, तो वो भी एक चीज होता है, थोड़ा बहुत यू नो माइंड में नहीं होते ऑन द पिच। देन जीरू यू कैन आर्ग्यू एज मच एज वो स्कोर कर रहा है गोल्स, द प्रॉब्लम यहां पर है कि जीरू भाई कितना गोल्स करेगा अपने आप, और जीरू आई थिंक अभी जीरू इज मोर नीडेड इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, तो वो चीज ही इज नॉट बीन एबल टू इनकॉर्पोरेट इतना ऑन द पिच
वो Tomori, I think, need to do more voice on the pitch. Simple as that. Or Pioli himself. There's a lot of reasons. Calabria वापस आ रहे, तो things have changed, but let's see how they do. Theo Hernandez has been terrible. Yeah, this is also the very good point. Very good point. Theo Hernandez का एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, the guy is over zealous. वो हमेशा सोचता है भाई मैं मिडफील्डर कम विंगर कम लेफ्ट बैक हूँ. तो कहीं ना कहीं, लाइक आई सेड, इसलिए बोल रहा हूँ, प्ले हिम एज अ विंग बैक. Go three at the back. Yes, आपके पास quality center backs नहीं है, I understand. But you have a Kalulu, you have basically आपके Tomori, you have a say Simon Kerr. आप जाओ three at the back, build from that, and then do something towards it. Let's see. And yes, let's hit 8K as soon as possible. Just Tiger Beast बोल रहे, thanks a lot. Yes, Baggio वाला वर्ल्ड कप. Derby takes place in San Siro, right? या मतलब बेसिकली San Siro ही है. टेक्निकली नाम अलग बोल सकते हैं, लेकिन San Siro ही है वहां पर. अभी तक they don't have different stadiums, remember. इसलिए AC Milan are not spending. Remember that. If this Napoli wins Scudetto, are they overtaking? Yes, 100%. Sarri ki Napoli was very good on the eye. This Napoli is very good on the eye and for a longer duration already. Plus, if they win a trophy and especially Scudetto, 100%. मैं डाउट भी नहीं बोलूंगा, डेरिन, एब्सोल्युटली. यस. ओ, लुकाकू स्टार्ट नहीं करेगा भाई. एनीवे, टॉक अबाउट द एग्जैक्ट टीम न्यूज, इंजरीज, टैक्टिक्स और वो सब डिटेल में मैं जैसे बोला हूँ, आई विल ट्राई एंड कम बैक विद द वीडियो ऑन संडे एज वेल एज हम विल ट्राई एंड गेट अ पैनल ऑन. हम डिस्कस भी करेंगे उसके लिए, विल डू अ सेपरेट स्ट्रीम पॉसिबली और वीडियो. लेकिन डू लेट मी नो एवरीवन जिन्होंने नहीं दिया है प्रेडिक्शन ऑन योर मिलान डर्बी. आई एम कॉलिंग इट अ 1-all. लेट्स सी. अरे भाई मैं भी यार, भाई people in my college used to call me Kaka or Lampard. Some people used to call me Kaka, some people call me Lampard in my engineering days. But nice one that. What is pragmatic manager thing? Basically क्या है? The person first doesn't want to lose and then build from that. जो Italian style है, which is something which I think Pioli should do. But बिल्कुल यार, Mudit, thanks a lot. Big up, bro. Bye, Mudit. भाई उड़ रहे हो. Cancelo getting a assist on debut. That's not on, bro. Come on. As it is, Bayern Munich are so strong. Yeah, but I think Bayern Munich needed that as well. By the way, Bayern Munich किसके साथ खेल रही है यार इस weekend? Let me know. भाई honestly speaking, they might have to change Pioli. बहुत ही unfair होगा, but I think अगर ये continue होता है, only then. I know he won Scudetto after so long. He deserves a time. लेकिन until the summer wait करिए. अगर ये continue होता है and we don't qualify for Europe as in Champions League, I think it needs a change in management. No two ways about it. मेरा आप चेक कर सकते हो, नो योर क्रिएटर वाला एक है, नहीं तो मैं पूरे रात ये सब क्वेश्चन लूंगा तो भाई पूरे रात चलता रहेगा. मैं और यू कैन ऑलवेज डीएम मी भाई. ये है नो योर क्रिएटर, एक प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हो, उसमें मेरी स्टोरी है, तो डू चेक इट आउट. बेसिकली स्पीकिंग, चैंपियंस लीग 99, लीग फुटबॉल ऑफ EPL 2002, बट जनरली स्पीकिंग इधर उधर का पहले भी करता था एब्सोल्युटली, बिकॉज इंटरनेशनल फुटबॉल काफी देखते थे फ्रॉम लेट 90s. आर्यन, मैंने अगेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ग्रीनवुड इन पर्टिकुलर इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीम अराउंड द 1 hour मार्क, तो आप जाकर देख सकते हो और वॉच इट बैक. थैंक्स अ लॉट. 3-2 मिलान. ओके भाई बिल्कुल यार, चेल्सी के तो काफी एक्साइटेड है भाई. आई नो फर्स्ट 35 मिनट्स में हम चेल्सी बात किए एंड विल कम बैक टू इट, साथ साथ में FPL टॉक के बाद में. बट नाइस टू सी यू एज वेल, एब्सोल्युटली. टूकल टू मिलान पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो यार, मुझे लगता है क्योंकि टूकल इज अ काइंड ऑफ गाय, आई थिंक वो एम करेगा नोइंग हिमसेल्फ दैट यार आई वांट अ स्क्वाड and backing which wins me the Champions League or at least competes for it. Milan at this point in time Champions League level में नहीं है. And हम बात करेंगे Spurs के साथ क्या होता है and all that, we'll come to it, लेकिन within I don't see that happening, but big up to you bro. भाई सब लोग again hopefully likes जो target है हम reach कर जाएगा. 175 likes, are we there? Do let me know in the chat people. 175 likes थोड़ा सा मांग रहा हूँ. 7.25k subscribers, come on. अगर नहीं किया तो hit that subscribe button and like button, अगर नहीं किया तो FPL पे आ जाए. और then we'll talk about little bit अगर टाइम रहा तो about other games. By the way, I know Aston Villa in good form. They'll do well against Leicester. Quick prediction में दो तो Aston Villa will beat Leicester. Brentford against Southampton. Brentford has in brilliant form. लेकिन मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ Southampton are desperate. मुझे लगता है it might be a draw. Brighton against Bournemouth. ये वाला, as much as Brighton have only scored goals less than Man City and Arsenal, ठीक है, अंडर डिजर्बी जो हुआ है ना, बट आई कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा सरप्राइज, बिकॉज सेम रीजन जो साउथहैम्पटन का बोला, आई कैन सी ब्राइटन बोर्नमथ बीइंग अ हाई स्कोरिंग ड्रॉ. तो आई एम गोइंग 2-all ब्राइटन बोर्नमथ.
और मुझे चाहिए भी ब्राइटन ड्रॉप करे पॉइंट्स, बट हैविंग सेड दैट, इवन एज न्यूट्रल आई फील दैट इट माइट बी डिफिकल्ट. बोर्नमथ, साउथहैम्पटन दोनों, it's a relegation dog fight, तो both getting draws against Brentford and Brighton respectively. Forest Leeds, मैं देखता हूँ that I can definitely see Forest doing well considering उन्होंने एक साइनिंग की है. yes, आयु has come in, लेकिन काफी साइनिंग्स की है. not just that, Rodrigo is missing out. yes, FPL gurus, भाई Rodrigo को एक मेजर ब्लो हुआ है. 2 month he is out. Rodrigo of Leeds जो सेकंड स्ट्राइकर खेलते हैं, तो ही इज आउट. रिमेंबर, हैविंग सेड दैट, यस, नॉन्टो इज देयर. भाई एफपीएल पर आ जाते हैं उससे ही. इट्स अ नाइस वे टू कमिंग टू एफपीएल भाई एवरीवन. तो सबसे पहले मैं करने वाला हूं, एंड यस, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एफपीएल, डू स्टिक अराउंड. हम साथ साथ में हम थोड़ा बहुत मैचेस के बारे में बात करेंगे, एंड दिस कवर्स एंटायर ईपीएल, राइट. उससे पहले, पीपल हु आर रियल मैड्रिड फैंस, बार्सिलोना फैंस, वुड लाइक टू सी योर कमेंट, योर प्रेडिक्शंस एज वेल. रियल मैड्रिड आज रात को खेल रही है अगेंस्ट वेलेंसिया आई बिलीव, और बार्सिलोना प्लेइंग सेविया, दैट हैपेंस ऑन मंडे. ठीक है, तो उस पर गिव योर प्रेडिक्शंस. रियल मैड्रिड वर्सेस वेलेंसिया एंड बार्सिलोना अगेंस्ट सेविया विद योर स्टार्टिंग 11 प्रेडिक्शंस. अच्छा, एफपीएल पर क्विकली मैं थोड़ा सा पहले, एज ऑलवेज आई विल गिव क्विक पॉइंट्स. क्विक पॉइंट्स ये है कि डबल गेम वीक है. रिमेंबर, गेम वीक 22 इज अ डबल गेम वीक. मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लीड्स के लिए. मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लीड्स भी होने वाला है इवेंचुअली. इनफैक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और लीड्स आपस में 2 बार खेलने वाली इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. गेम वीक 23, तो याद रखना, मैनचेस्टर यूनाइटेड लीड्स, यू हैव अ डबल गेम वीक इस वीक. डबल गेम वीक 23, नेक्स्ट गेम वीक जो है वो होगा आर्सेनल और मैन सिटी के लिए. आर्सेनल मैन सिटी भी मैच होने वाला है, रिमेंबर. तो आर्सेनल, मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लीड्स, याद रखिएगा. देयर आर डबल गेम वीक्स इन द नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर दीस 4 क्लब्स. हैविंग सेड दैट, गेम वीक 25 जो होने वाला है 3 हफ्ते बाद में, वहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड, 4 टीम्स के पास मैचेस ही नहीं है. तो यू डोंट वांट टू पुट ऑल योर एग्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड का बास्केट, क्योंकि आपको इवेंचुअली निकालने पड़ेंगे प्लेयर्स. क्योंकि गेम वीक 25 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई गेम नहीं है, न्यूकासल का कोई गेम नहीं है, ब्राइटन का कोई गेम नहीं है, ब्रेंटफोर्ड का कोई गेम नहीं है. तो याद रखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लीड्स, आर्सेनल, मैन सिटी, go for it, but be safe on Manchester United थोड़ा, because game week 25 में they don't have a tie, just like Newcastle, Brighton, Brentford. ठीक है, easier 5 game weeks, जो next 5 game weeks में compared to other clubs, मैं यहाँ पे नोट्स बना अपने भाई. these मैं अभी कमेंट किया हूँ, ये 5 क्लब, ये वाला कमेंट देख लो, 1 2 3 4 5 6, चले मेरी काउंटिंग होंगे भाई, ये 6 क्लब्स compared to other clubs, these are having easier fixtures. That's what I assess. ठीक है, आर्सेनल, चेल्सी, फुलहम, लिवरपूल, फॉरेस्ट और साउथहैम्पटन. बोलने का मतलब है, आप अगर कोई प्लेयर ट्रांसफर ले रहे हो और हफ्ते 11 में लेना चाहते हो, डू नॉट हेजिटेट टू टेक प्लेयर्स फ्रॉम दीज क्लब्स. आई थिंक दे आर हैविंग एन ईजियर फिक्सचर लिस्ट कंपेयर टू मोस्ट अदर क्लब्स. मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राइटन भी बोल सकते हैं, लेकिन उन दोनों का, क्योंकि गेम वीक 25 में कोई गेम नहीं है, इसलिए उनको इंक्लूड नहीं किया. अच्छा, डिफिकल्ट वाले फिक्सचर्स. अब डिफिकल्ट वाले फिक्सचर्स आई थिंक मैं बोलूंगा, जो avoid these clubs based on difficult fixtures and form. ये वाला लेस्टर एंड वेस्ट हैम, अवॉइड दीज 2 टीम्स. ठीक है, these are difficult two ones. ठीक है, और मैं बाकी कमेंट स्टार कर रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट. आई जस्ट वांट टू गिव अ फ्यू पॉइंटर्स अवे. मस्ट हैव प्लेयर्स, एवरीवन, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग टू दिस. मस्ट हैव प्लेयर्स जो आपके टीम में होना ही चाहिए, मैं बोलता हूं, अगर हो सके तो. अगर आप लोग जा रहे हो फॉर फ्री हिट, गो फॉर दैट, व्हाटएवर इट डजंट मैटर, क्योंकि अभी बहुत गेम्स हो रहे. अच्छा, इन गोल, लीड्स के गोलकीपर मैस क्लियर, आई थिंक ही इज ऑप्शन. द रीजन, जैसे मैंने बोला, डबल गेम वीक है, तो डू नॉट हेजिटेट टू टेक हिम. ही इज अ गुड ऑप्शन. 4.5 मिलियन है, आई थिंक मैस क्लियर, एंड ही इज अ गुड ऑप्शन. ही इज ऑलमोस्ट अ मस्ट हैव फॉर मी, अगर आपके पास बजट है, अगर आपके पास फ्री ट्रांसफर है, या आप एक चिप खेल रहे हो. डिफेंस में लूक शॉ, ट्रिपियर और बेनमी, इन तीनों में से यू नीड टू हैव मिनिमम 2 इफ नॉट ऑल द 3. लूक शॉ, ट्रिपियर और बेनमी. ट्रिपियर, जैसे मैंने बोला, ही इज ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स, तो कंटिन्यू डिस्पाइट न्यूकासल मिसिंग अ गेम इन गेम वीक 25, तो कीप हिम, डोंट रिमूव हिम. लूक शॉ 100% कीप हिम. बेनमी एज वेल, अगर हो सके तो. बहुत सस्ता है, 4.8 मिलियन में अच्छा पॉइंट लाता है. रिमेंबर, ब्रेंटफोर्ड आर ऑन अ क्रेजी रन. इनफैक्ट ब्रेंटफोर्ड का जो फॉर्म रहा है ना अनबीटन का, दे हैव बीन अनबीटन फॉर 8 गेम्स, which is the best ever since 1930s. तो ब्रेंटफोर्ड आर इन अ गुड रन ऑफ फॉर्म. अगेन मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेता हूं, एंड देन विल कम टू दैट. आकाश भाई, ये अगर मैं बोलते रहूं, ये ऐसे कमेंट्स लो, तो भाई पूरे रात चलते रहूंगा. मच लव टू यू ब्रो, लेकिन विल कम टू इट एब्सोल्युटली. लाइक आई सेड, चेक आउट नो योर क्रिएटर.
but we'll get that. Gaurav बोल रहे blue color, why not? Anyway, that's also reason you can say that. लेकिन हाँ, डेरेन का ये टीम है इंटरेस्टिंग. पोप, ट्रिपियर, नेथन आकी, शॉ, एंड्रियास, KDB, Rashford, Martinelli, Mitoma, Kane, Haaland. Okay, budget 2.7 million. Any recommendations? भाई सब लोग in the chat do recommend me as well. For a change मैं पूछ रहा हूँ. Do you all think मुड्रिक को लाना आवश्यक है टीम में? Is मुड्रिक in the category of must have? Do let me know because yes, jury is out. अभी थोड़ा एक कैमियो ही खेला है and wingers का touchwood you never know what can happen. But out and out goal scorer भी नहीं है, you can say that. But at the end of the day, I think it's not a bad option. Mudrik actually might not be a bad option. 7 million hai in midfield. I think it can be a differential. Let me just check it out. 2.5% ने पिक किया है मुड्रिक को. मैं डिफरेंशियल्स पर आ रहा हूँ डेरिन साथ साथ में. तो आपका जो टीम है ना, देखिए नेथन आकी थोड़ा सा मैं बोलूंगा बच के रहना. यस ही हैज बीन टेरिफिक, ये जरूर से बोलूंगा. एंड आई नो दैट सिटी बहुत कंसीड भी कर रही है, स्पर्स भी कंसीड कर रही है, लेकिन आई कैन सी हाई स्कोरिंग गेम सिटी वर्सेस स्पर्स. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स इन टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम. तो नेथन आकी को मैं बेंच करूंगा इस टाइम. और मैन सिटी के इतने इजी फिक्चर्स नहीं है. तो अगर हो सके तो अगर आप देख रहे हो फॉर अ न्यू डिफेंडर, अगर आपके पास फ्री है, यस आई एम टेलिंग फॉर a change to remove a city defender, so it can be that Mitoma is great, Kane is great, Haaland is great. इसमें must have में मैं बोलूंगा लूक शॉ, ट्रिपियर, बेनमी थे, राइट? तो आपने लिया शॉ, आपने आपका ट्रिपियर नहीं है ना? ट्रिपियर है तो आप जाइए बेनमी के लिए. यस इट्स थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस वाला सजेशन, बट आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स. लेकिन आप बोलोगे बेनमी गेम वीक 25 में ही इज नॉट हैविंग अ गेम, then I think you need to probably go for, as in simply put, keep Aki on the bench, और आप बेंच से एक जन को लाओ. क्यों? क्योंकि डबल गेम वीक मैन सिटी का है नेक्स्ट वीक, ठीक है? तो कीप Aki on the bench and get someone from the bench अगर आपके पास है तो बट हाँ, बेनमी इज एन ऑप्शन फॉर श्योर इन माय ओपिनियन. पुदिन का ये है केपा, ट्रिपियर. चलो उसके पहले मैं आई एम कमिंग टू द टीम्स वन बाय वन. आई एम कमिंग टू द रिकमेंडेशंस. मैं काफी मैं स्टार्ट भी करके रखा हूँ. क्विकली मैं स्टॉप हो गया था मस्ट हैव्स में मैंने बोला था मेस्लियर, लूक शॉ, ट्रिपियर, बेनमी. इन चारों में से दो तो होने चाहिए आपकी टीम में डेफिनेटली. मिडफील्डर्स में रैशफोर्ड, ओडेगार्ड, मिटोमा, ब्रूनो फर्नांडिस. आई नो सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन रैशफोर्ड, ओडेगार्ड, मिटोमा, ब्रूनो फर्नांडिस में से अगेन दो होने ही चाहिए आपकी टीम में. आइडियली मैं बोलूंगा रैशफोर्ड, क्योंकि डबल गेम वीक है मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी, तो इमीडिएटली होना चाहिए. एंड ओडेगार्ड एज वेल, क्योंकि ओडेगार्ड का डबल गेम वीक होने वाला है नेक्स्ट गेम वीक. तो आई थिंक ओडेगार्ड, रैशफोर्ड, एंड बिकॉज दे आर इन गुड फॉर्म, कीप देम. मिटोमा डेफिनेटली आप बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई सी द फैक्ट कि ब्राइटन का गेम वीक 25 में दे आर हैविंग वन नॉट अ गेम, और प्लस इतना रन जो है ना, फाइनली एक मैं लेता हूँ, देखता हूँ ब्लिप इस बार, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया. लेकिन अगेन डोंट रिमूव, प्रेफरेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ. रिमेंबर ओडेगार्ड 6.9, रैशफोर्ड 7.2. फॉरवर्ड में तो नो टू वेज अबाउट, हालैंड, केन और टोनी. आई थिंक दीज आर द जनरल रिकमेंडेशंस. मे बी मार्शल, क्योंकि वो वापस आ रहे, दैट माइट बी वन ऑफ द थिंग्स. एक लेफ्ट फील्ड बोलूं मैं, नॉन्टो. मैं ऑलरेडी बोल दिया हूं, नॉन्टो. पीपल हु फॉलो द चैनल फ्रॉम लॉन्ग नो दैट इटालियन गाई बहुत ही मतलब क्विक फीट है, बहुत अच्छा है, और वो अच्छा कर रहा है लीड्स के लिए. कंसिडरिंग रोड्रिगो बाहर है, नॉन्टो, विल्फ्रेड नॉन्टो, go for him. 5 million है खाली फॉरवर्ड. अगर someone wants a cheap striker, go for Nonto. Weghorst हो सकता है, but he might not start. But anyway, let's come to the teams quickly. Kepa, Trippier, रॉबर्टसन. केपा ठीक है, ट्रिपियर ठीक है, रॉबर्टसन इफ है पुदिन एब्सोल्युटली फॉर मी यस, मुड्रिक यस, सॉली यस, ब्रिलियंट, रैशफोर्ड यस, एम्बेमो ओके, केन, हालैंड, एल्मिरॉन. हाँ अब देखो, अगर इफ आई एम यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई विल एक्चुअली ब्रिंग इन सालिबा फॉर रॉबर्टसन, वो करूंगा मैं. और एल्मिरॉन कहीं ना कहीं मुझे लगता है दैट हिज फॉर्म माइट नॉट कंटिन्यू. आई जस्ट हैव दैट गट फीलिंग. सो लाइक आई सेड, मिडफील्ड में और ऑप्शंस जा सकते हैं आप. आई थिंक जो मैंने बोला आपके पास सब नहीं. ओडेगार्ड आपके बेंच में, तो गेट हिम ऑन, गेट ओडेगार्ड इन द 11 इस बार. आई डोंट थिंक आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है पुदिन, लेकिन आप अगर करो तो यू कैन टेक अ चांस. मिडफील्ड में यस आई एम गोना से इट, वर्ड प्रोवेस. वर्ड प्रोवेस यस ज्यादा पॉइंट नहीं करता, लेकिन आई थिंक साउथहैम्पटन का इजियर रन है, तो गो फॉर वर्ड प्रोवेस एज अ डिफरेंशियल भी. ओके हाँ, टोनी इज अ गुड पिक फॉर श्योर. आदरी क्या हाल है भाई, नाइस टू सी यू.
हैवर्ट्स इन फॉर श्योर, एंजो इन. हाँ, एंजो के बारे में, हाँ एंजो के बारे में बोलता हूँ. नॉट येट, नॉट येट. एंजो फर्नांडिस नॉट येट. मुड्रिक आई वुड से यस. एंजो नॉट येट. द रीजन बीइंग अभी भी हो सकता है, मुझे मेरा गट फील है कि मे बी जस्ट पॉटर लुइस हॉल को एक लास्ट चांस जाए. नो क्लब वेबसाइट से, मतलब ही इज नॉट एडेड टू द क्लब वेबसाइट लुइस हॉल. लेकिन आई फील एंजो फर्नांडिस माइट कम ऑफ द बेंच, मुझे लग रहा है इस बार. ऑल्दो मैं एग्री नहीं करता क्योंकि स्टैमफोर्ड ब्रिज में एंड ही इज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा नहीं खेल रहा है. होपफुली वो शुरू करे, लेकिन एक चांस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ डोंट गेट हिम इन येट. Yep, I think Modric, I've said yes. Badiashile is not a bad option. Considering वो चैंपियंस लीग में शायद नहीं खेले तो प्रीमियर लीग में हर एक गेम खेल सकता है. गौरव हैज अ वेरी गुड पॉइंट. Badiashile in. Yes, why not? Badiashile का क्या है यार? I think that's a good recommendation for me. Absolutely good recommendation. I think 5 million है. Not too cheap, but it's okay. Yes, बिल्कुल. Okay, what about Lisandro Martinez? Thanks. If no, I'll take me. Okay. देखिए यार, द फैक्ट इज आई थिंक देरेन यू ऑलरेडी हैड अ शॉ. मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. मैं बोला था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, एज मच एज दे हैव अ डबल गेम वीक, 2 वीक्स लेटर, इस गेम वीक के बाद 2 हफ्ते बाद में उनका मैच ही नहीं है. तो डोंट टेक टू मेनी मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स, आई वुड से. Be careful. So I would not go with Lisandro Martinez. I would go with what you suggest. I suggested Ben Mee itself. I know Ben Mee का भी same ही factor है, but सब you're putting all the eggs in one basket with Manchester United. Don't do that. I would recommend. थोड़ा सा risk लेना है तो ले सकते हो, but I would not suggest that. Let's see. I might be wrong, but that's just my gut feel. Having said that, Estupinan यार, he is another defender. Estupinan. लेकिन वही है, ब्राइटन के if I'm seeing fixtures, they also don't have a match in game week 25. तो अभी के लिए आप ट्रांसफर इन तो नहीं करोगे, लेकिन एस्तुपिनान जनरली इज अ गुड पिक. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, शार और सालिबा. शार भी नहीं, शार का भी आई थिंक डिफिकल्ट गेम वीक है, आई वुड से इन अ फ्यू वीक्स. न्यूकासल डजंट हैव अ ग्रेट फिक्चर लिस्ट. तो सालिबा मैं ज्यादा बोलूंगा. शार से जगह सलीबा. सलीबा इज एन ऑप्शन आपके. एस्टुपिनान इज एन ऑप्शन. बेनी इज एन ऑप्शन देयर इन. सो दीज आर योर ऑप्शंस. लेट्स सी. और ओके, देखते हैं. कैप्टन रैशफोर्ड, वाइस कैप्टन किसको करूं? ट्रिपल कैप्टन एक्टिवेट है. अरे भाई साहब, रैशफोर्ड ट्रिपल कैप्टन. हाँ यार, डबल गेम वीक है, व्हाई नॉट? इट्स अ गुड पिक. गुड पिक. वाइस कैप्टन देन गो फॉर अनदर यूनाइटेड प्लेयर. आई नो सिटी हैज अ टफ गेम दिस टाइम एंड जनरल टफ रन है. पुदिन का ये था ना वाइस कैप्टन. ओके, गो फॉर. अच्छा, एक सेकेंड. यू नो व्हाट? हाँ नहीं, आई कैन सी मित्रोविच स्कोरिंग यार अगेंस्ट केपा. नहीं तो आई थिंक गो फॉर ट्रिपियर. ट्रिपियर वाइस कैप्टन, दैट्स व्हाट आई वुड से. नहीं नहीं, ओडेगार्ड, सॉरी ओडेगार्ड. आपके ओडेगार्ड से आप ला रहे हो ना एवन में. गो फॉर ओडेगार्ड. ओडेगार्ड आई थिंक विल गेट द बेटर ऑफ एवर्टन, आई फील. लेट्स सी. तो ओडेगार्ड मैं बोल रहा हूँ. हाँ, ये जोशुआ किमिक, नाइस टू सी यू ब्रो. अभी नहीं पता चलेगा. इट विल बी, आई थिंक दे हैव टाइम अंटिल 11:30 PM, लाइक जस्ट बिफोर मिडनाइट यूके टाइम, व्हिच इज बेसिकली हम लोग का सुबह का 5 बजे. एनीवे, नाइस टू सी यू भाई. सब लोग लाइक कर देना. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सैंचेज, मार्टिनेज, बॉटमैन. बॉटमैन इज अ नाइस पिक. सैंचेज ओके. मार्टिनेज ओके. आप मार्टिनेज क्यों लूक शॉ को नहीं लियो? फेयर इनफ. लूक शॉ वुड हैव बीन अ बेटर पिक, लेकिन अभी ले लिया तो ठीक है. लैम्टी. लैम्टी वाई? लैम्टी वाई? ओडेगार्ड, केडीबी, रैशफोर्ड, एंड्रियास, टोनी, हालैंड, केन. गेट इन पेड्रो पोरो इन 11. यस, अगेंस्ट सिटी. नहीं, एक्चुअली नहीं. एक्चुअली यू नो व्हाट, जस्ट सब्स्टिट्यूट लैम्टी. सब्स्टिट्यूट लैम्पी. मैंने डिफेंस में बहुत नाम लिए, उसमें से जो भी नहीं है आपकी टीम में आप देख लीजिए. लूक शॉ, ट्रिपियर, बेनमी, सलीबा, शार, एस्तुपिनान. ये 6 ऑप्शंस मैंने बोले डिफेंस में. आई थिंक दीज 6 ऑप्शंस में से आपकी टीम में 3 होने ही चाहिए, इज व्हाट आई वुड से. तो गो फॉर एनी ऑफ देम जैक. आई होप इट हेल्प्स. चलो, डेरे ने मी को ले लिया है. बॉटमैन इज अ गुड पिक, लेकिन गोइंग बाय एफपीएल पॉइंट जो बोनसेस मिलते हैं ऑल, आई थिंक शार हैज बीन बेटर देन बॉटमैन. फेबियन शार एज वेल एज ट्रिपियर फॉर श्योर. ओके, नाइस टू नो दैट. आई एम जस्ट सीइंग क्विकली अभी. भाई पेरिसिच इंटरेस्टिंग. सिटी है, उनका गेम इंटरेस्टिंग रहेगा. काफी रिस्क है, बट व्हाई नॉट? समटाइम रिस्क भी अच्छा होता है. आई थिंक नीड तो नहीं है आपको ज्यादा चेंज करने की. बट अगेन द फैक्ट इज आपके पास अगर ट्रिपियर शॉ है तो फेयर इनफ. बेनमी भी है, फेयर इनफ. हु एल्स कैन यू टेक? आई थिंक प्रोबेबली मैं थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड बोलूँ तो आपके पास आर्सेनल प्लेयर्स कम है लगता है.
हाँ ओडेगार्ड है आपके पास, चलो ठीक है, नहीं ठीक है, ऋतुराज आई थिंक योर टीम इज गुड, डोंट वरी, थैंक्स एज वेल। भाई लेट्स गो टू 8K, लेट्स गो देयर एज सून एज पॉसिबल पीपल, कम ऑन। एंड oh wow, interesting, Piyush. No, Joshua, I don't. But anyway, let's go to the FPL questions. I made a team in FPL for first week and then wasn't able to change. भाई गौरव, मेरा भी वही है, मैं बोलता हूँ, रेकमेंड करता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक, थोड़ा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा गट फील हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो सब शेयर करता हूँ, लेकिन मैं हर एक 3-4 हफ्ते में एक बार कर लिया तो कर लिया, बस वो वाला चीज है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, यस, बट फॉर पीपल ऑल पार्टिसिपेटिंग, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, नॉट जस्ट द प्रेडिक्शन लीग विच इज गोइंग ऑन फॉर मेंबर्स, देयर इज ऑल्सो अ स्ट्रीम और अदर कॉन्टेस्ट विच इज गोइंग ऑन फॉर FPL। FPL का जो कोड है, इट इज ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यस, तो डू चेक इट आउट, डू एंटर दैट FPL कॉम्पिटिशन, और बोलेगा आप क्या कर रहे हो भाई, देखना है अभी कौन कर रहा है अच्छा। डू यू ऑल वांट टू सी? आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ टिप्स एंड पॉइंटर्स अभी, लेकिन मैं क्विकली देखता हूँ क्या हो रहा है अपने FPL में। आई नो 2 घंटे की स्ट्रीम हो गई है, काफी लंबी। I can't thank enough यार people who are there from the beginning till the end, but not just today, we are streaming almost every day with shorter videos also coming on, you know that। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड, ओके, मैं हेड टू हेड फैंटेसी देख रहा था क्या, एक सेकंड, मैं वो रॉन्ग वाला देख लिया, एक सेकंड दीजिए मुझे बस, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर ABFC फैंटेसी लीग। हाँ, ABFC फैंटेसी लीग, भाई कालीडुक खाली बाली, प्रथमेश, प्रथमेश भाई मेरे, प्रथमेश आर यू वाचिंग, आर यू वाचिंग, यू आर ऑन टॉप ब्रो, प्रथमेश इज ऑन टॉप। यार मेरी FPL टीम तो गई तेल लेने, डेरेन कम ऑन, मैंने चेंज नहीं किया पता नहीं कब से, बट एनीवे ये है द लीडर बोर्ड as things stand. Yes, as I said, beginning of the season में बोला था that the person who will be top will be eligible for a prize, but hopefully you will take us to 10K, but which we are on the course of. Hopefully we'll do that. Yes, come on, we'll do that absolutely. लेकिन pain in the ass, interesting name that. Uh, okay, again big up to Prathamesh, absolutely, देखते हैं अब क्या होता है in the end. If Enzo doesn't start tomorrow, who will start tomorrow? वही Enzo नहीं start करेगा. As per the press conference, Ruben Loftus-Cheek is fitter but not ready to start. Kovacic अभी भी injured है. भाई गौरव and everyone in the chat, भाई 2.25 घंटे से बोल रहे, like I always said, भाई पहले 30-40 मिनट में मैंने पूरा चेल्सी के बारे में बोला है, पूरा टीम न्यूज है, आपको प्रेडिक्टेड लाइनअप सब चीज मिलेगी वहां पर, देख लीजिए। लेकिन क्विकली मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप गौरव यूर कांस्टेंट सपोर्टर, I think Lewis Hall comes in. That's the only option. Sub injured है. Zakaria injured है. Kovacic injured है. Jorginho चलेगा Arsenal. And of course, like I said, Ruben Loftus-Cheek is not ready to start yet. So Hall might start and Enzo might come from the bench. लेकिन वही, I hope Enzo starts. Okay, चलो भाई. No problem. I'm Piyush. Much love to you. भाई तो मैंने शायद ले लिया भाई. Anyone who have not clarified when it comes to the FPL that you really want to know, you can DM me. There is time till tomorrow. जब टाइम मिले तो मैं रिप्लाई करूंगा. Yes, मेरे सोशल लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, बी इट ऑलमाइटी ब्लूज FC या ऑलमाइटी स्पोर्ट्स का जो ये है इंस्टाग्राम है या ट्विटर अकाउंट है, डू चेक इट आउट एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं पूरा कर लिया है जहां तक मुझे याद है। I don't remember any other comments coming where I missed. Let me take a. I know मैं स्टार किया हो काफी कमेंट, लेकिन बहुत लंबा स्ट्रीम हो गया। लेट मी जस्ट क्विकली गो ओवर इट। हाँ, ये वाला, कैन वी रिमूव RLC फ्रॉम UCL स्क्वाड एंड ऐड फिलिक्स? अच्छा, बाय द वे, जो भी लोग को नहीं पता है, आई हैव रीस्टार्टेड शॉर्टर वीडियोस एज वेल, जब भी टाइम परमिट्स, डू चेक इट आउट। एंड आई हैव कवर्ड अ वेरी इंट्रीगिंग स्ट्रीम, वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया नॉट जस्ट चेल्सी के लिए बट जनरली फॉर अ UCL फैन टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द UCL। तो चेक करिएगा। तो वी कैन रिमूव RLC फ्रॉम UCL, डेफिनेटली डेफिनेटली हम कर सकते हैं पुदिन, लेकिन पॉइंट इज हम क्यों करेंगे, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया, क्योंकि हमने खाली 24 A लिस्ट प्लेयर्स के किए थे, तो वी हैव वन स्लॉट फ्री एनीवे, वन स्लॉट फ्री है, 25 कर सकते हैं राइट ए लिस्ट में, प्लस जो एग्जिस्टिंग 24 थे उसमें से जॉर्जिनो चले गया तो एक और स्लॉट फ्री है, तो 2 हो गए, और जो तीसरा है वो बेटिनेली का स्लॉट होगा, तो 2 + 1 3, तो 3 स्लॉट होंगे, वो 3 स्लॉट जाएंगे बेसिकली 2 या 3 न्यू प्लेयर्स विच इज द मैक्सिमम यू कैन गो फॉर। Simple explanation. So then, I hope that helps, right? तो there's no point of removing RLC from the squad. Same things. आप अगर कुलीबाली को हटाते भी हो, अगर बाड़े शेडे को डालो, तो भाई वो काउंट करेगा in one of the three and maximum is 3. तो आप नहीं
रख सकते हो, जैसे आपने खुद कमेंट किया था आज सुबह कि यार वी कैन नॉट कीप अ say a Felix or a Modric or an Enzo Fernandez out of the Champions League squad. Can we really? Let's see if Potter is so brave. Let's see. Maybe Felix to some extent, but no, I don't think so. क्योंकि लोन प्लेयर है बस. Anyway, आई थिंक ही विल. जैसे मैं लिया था स्टार्ट कमेंट्स में ले रहा हूँ क्विकली. ये मैंने ले लिया था, हमने बहुत डिस्कस कर लिया है. यस पुतिन, मैंने देखा था आपका. शदीरा दो वे. मैंने वो भी देखा था. Trossard can be used anywhere. He can replace anyone. He is not Martinelli substitute only. Yeah, that's the best part about it. लेकिन मुझे लगता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होगा. क्विकली मैं बोलूँ एटलीस्ट गेमिंग. आई फील दैट when Zinchenko plays, Martinelli will play. When Tierney plays, Trossard will play. I have that feeling. That is a better combination. ओके. हाँ, ये आई थिंक दक्ष ने लिया था, शायद एक्सप्लेन कर लिया था. बिपरा, बिग अप टू यू, एब्सोल्युटली आर्सेनल फैन इन द हाउस. एरन रामजे प्राइम और आर्टेटा वाज बेटर. हाँ, ये वाला शायद दक्ष ने नहीं लिया था पुदिन, बट आई फील दैट आर्टेटा वाज मच बेटर. एरन रामजे एज मच एज वो एक बिग गेम प्लेयर डेफिनेटली था, लेकिन आर्टेटा टेक्निकली एज वेल एज जो फ्री किक्स लेता था, आई थिंक लॉट ऑफ चीज आर्टेटा वाज बेटर इन माय ओपिनियन, जस्ट माय ओपिनियन. जॉर्जिनियो डिफरेंशियल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वी डोंट नो इफ ही इज गोइंग टू स्टार्ट. आई डोंट थिंक ही विल स्टार्ट. हॉर्सेस फॉर कोर्सेस होगा. कैन चेल्सी फिनिश इन टॉप 4? मुजाहिद, बिग अप टू यार. सॉरी, मैंने पहले शाउट आउट नहीं दिया आपको. अगेन ऑल द बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल हियर, स्पेशली द मेंबर्स इन द मॉड्स. लेकिन चेल्सी, यस वी कैन, लेकिन न्यूकासल को ड्रॉप करने पड़ेंगे पॉइंट. सिंपल एज दैट. यप, आई हियर दैट. कोई नहीं गौरव. भाई नहीं यार, नहीं आएगा. लुकाकू नहीं आएगा. आएगा भी तो ही इज नॉट अ स्टार्टर एनीवे. उसका फॉर्म और फिटनेस बहुत ही बुरा है. राइस टू आर्सेनल चेल्सी, लिटरली लड़ाई होने वाली है समर में. हाँ, मैं बोलूंगा चेल्सी. एंड ऑफ कोर्स दक्ष वाज हियर, बाय द वे हिज चैनल इज बिलो एज वेल. वो बोलेंगे आर्सेनल. दैट्स हाउ इट इज. ये वाला सौविक का कमेंट भी मैंने स्टार करके रखा था. एंजो इज बेटर देन चुआमेनी. डिस्कस. बोथ आर डिफरेंट प्लेयर्स ब्रो. बोथ आर डिफरेंट प्लेयर्स. देखो, एंजो फर्नांडिस मैं बोलता हूँ इज इन द लीग ऑफ अ कोवाचिच काइंड ऑफ अ डिफेंसिव मिडफील्डर. तो ही इज समवन हु इज बेटर ऑन द बॉल. यस, चुआमेनी बहुत अच्छा है बाय द वे. जैसे कैसेमीरो को हम अंडररेट करते थे, चुआमेनी विल बी इन दैट लीग. लेकिन चुआमेनी का फर्स्ट चीज इज अ कोर डीएम. एंजो का उल्टा है. ही कैन डू दैट, बट हिज फर्स्ट थिंग इज पास फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, वो वाला चीज है. तो आप ही बोलेगा नंबर 8 विल बिकम अ नंबर 6. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजो एंड चुआमेनी. कैसे समझाऊं? लाइक आई थिंक समवन समवन लाइक जैसे हमने कल बोला भी था दैट कैन एंजो बिकम अ फैब्रिगास, जो आर्सेनल में थे. फैब्रिगास, Enzo has that ability actually. That is the kind of player we're looking at. Fabregas was not a Chouamani. Fabregas was someone who was playing next to that player, जो बहुत डिफेंसिव वर्क भी करता था while in Arsenal young days, by the way. ओके, आई थिंक रिमूव कुलिबाली करते भी है तो आई थिंक रिप्लेसमेंट कम्स, लेकिन मैक्सिमम 3 नए प्लेयर्स ही डाल सकते हैं, तो आई डोंट थिंक इट सॉल्व द इशू. भाई जोशुआ किमेक, गौरव, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट शॉर्ट वीडियो. ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा छोटा वीडियो है. वॉच दैट. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया रीजंस एंड आई हैव रीजन इट आउट. आई बिलीव आई हैव रीजन आउट वेल. एनीवे, या हो सकता है, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली. बिल्कुल यार, डेरेन करेंगे. मेरी टीवी अभी काम नहीं कर रही, लेकिन आई विल वॉच इट ऑनलाइन एंड डू इट विद यू गाइस डेफिनेटली. तो यस, फॉर एवरीवन आउट देयर, वी आर ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, बट व्हेन इट कम्स टू चेल्सी, प्री मैच भी करेंगे हम, वॉच अलोंग भी करेंगे. अगेन कंडीशंस अप्लाई होता है, लेकिन मोर और लेस हम करेंगे. यू नो दैट एब्सोल्युटली. यस, इट्स गोइंग टू बी 1:30 को, तो वील जनरली कम 1 घंटा पहले एंड विल स्टार्ट द कन्वर्सेशंस. दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज एब्सोल्युटली. तो वील डू दैट. एंड यस, बाय द वे, कल सुबह मैंने डालना है मैसेज ऑन द कम्युनिटी पोस्ट फॉर मेंबर्स ऑन द प्रेडिक्शन लीग. एंड डू नॉट फॉरगेट, ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. भाई, वी हैव टू गेट अ विन नो मैटर व्हाट, कमिंग बैक टू चेल्सी. एंड आई होप कि भाई एंजो फर्नांडिस, मोड्रिक show their ability to the level that we expect them to, और बैंटर बंद हो जाए. आई नो वो तो चलते आएगा, बट एनीवे वी आर केयर फ्री, डजंट मैटर. प्रोजेक्ट वही है कि यार वी हैव टू विन द प्रीमियर लीग बैक. 5 साल हो गए, लेकिन नॉट इमीडिएटली, बट मे बी इन कपल ऑफ इयर्स टाइम, हू नोस. बट एनीवे, नाइस टू एवरीवन, बेसिकली नाइस टू सी एवरीवन बेसिकली. एंड एवरीवन, भाई आज रात के मैचेस है. एनीवन इन द चैट इंटरेस्टेड? रियल मैड्रिड सेविया, सॉरी रियल मैड्रिड वेलेंसिया एंड बार्सिलोना सेविया, करेक्ट? तो डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स देयर. मैं डिटेल में बात नहीं कर सका, लेकिन विल कम बैक विद शॉर्टर वीडियो कल, as well as the live stream. Plus, we might be back live on Almighty Sports Plus परसों, and Sunday ko, remember, we might be also getting a panel for the Milan derby. Hopefully, I'm able to do that. Like a lot of things going on both the channels. Dono channels links are in below description, as well as the panels channel. See you all, and of course, up the channels. Bye.